ऑफ बिजनेस में है, लेकिन लिस्ट ऑफ बिजनेस में जब मैं विषय रखूं, जब आप अपनी बात को रखने का, मैं उस विषय पर भी आपको अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नहीं चलाना चाहते आप? सदन नहीं चलाना चाहते? प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते? मैं प्रश्नकाल चलाने के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। On the recommendations, observations of the committee contains in its 325th report on issues related to road sector. Third, the 362nd report on the action taken by the government on the recommendations and observations of the committee contained in its 342nd report on the demands of grants 2023-24 of the Ministry of Road Transport and Highway. And fourth, 363rd report on the actions taken by the government on the recommendations and observations of the committee contained in its 324th report on issues relating to untraceable monuments and the protection of monuments in India. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Sri Ramchandra Jangra. धन्यवाद सभापति महोदय मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन विषय पर विभागों से संबंध आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति 2022-23 के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में 20वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण 17वीं लोकसभा सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Statement by Minister Shri Ashwini Kumar Chobe. सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली के 14 क पर उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में विभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में अपने नाम के आगे सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री सोम प्रकाश। Respected sir, with your kind permission, I rise to make the following statements regarding number 1, status of implementation of recommendations of these observations contained in the 176th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on action taken by government on the recommendation of these observations of the committee contained in its 172nd report pertaining to the promotion and regulation of the e-commerce in India. Number 2, status of implementation of the recommendation of these observations contained in the 180th report
of the department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on demands for grant 2023-24, grant number 11, pertaining to the Department for Promotion of Industry and International Trade, Ministry of Commerce and Industry. Thank you. Shri Devu Singh Chauhan. Honorable Chairman, sir, in pursuance of the Direction 35 of the Honorable Chairman Rajya Sabha, I would like to lay a statement showing status of implementation on the recommendation observation contained in the 44th report of Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grant 23-24 pertaining to Department of Post on the table of the House. Statement regarding government business, Shri V. Muralidharan. With your permission, sir, I rise to announce that government business for the week commencing Monday, the 11th of December 2023 will consist of 1. Consideration and passing of the following bills as passed by Lok Sabha. 1. The Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023, Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023, the Repealing and Amending Bill 2023, and the Central Universities Amendment Bill 2023. 2. Consideration passing of the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, conditions of service and term of office Bill 2023. 3. Consideration and return of the Appropriation Number 3 Bill 2023 related to the first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. 4. Consideration and return of the Appropriation Number 4 Bill 2023 related to demands for excess grants 2020-21 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. 5. Consideration and passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha. 1. The Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. 2. The Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023. 3. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. 4. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. And 5. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. 6. Consideration passing of the following bills after they are introduced, considered and passed by Lok Sabha. 1. The Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 and the Provisional Collection of Taxes Bill 2023. Matters raised with permission, Shri Vikramjit Singh Sani. Point of order. Yes. Yes, Mr. Kirosh. Yes. So normally the convention is that on Fridays the afternoon session commences at 2:30, sir. But today in the revised list of business we have received as 2 p.m., sir. When such a decision was arrived, members are not aware, and why such a change, sir? We would like to know, sir. Please. Thank you. Honorable members, this is not being done from today. This has already been done earlier by me, and reason was given. Lok Sabha sits at 2 p.m. Lok Sabha and Rajya Sabha, being integral part of Parliament, need to adhere to the same time to the extent possible. And therefore it was 2 p.m. on an earlier occasion as directed by me. So this is not a beginning today. Shri Vikramjit Singh Sani. Honorable Chairman, sir, I would like to raise a very important issue which has been a heartburn for the Sikh community since decades. There is an ongoing political and legal movement in Punjab to seek remission of life sentences handed to Sikh political prisoners which were convicted during the militancy era. Please take your seat. This issue is a complex and multifaceted one. Mr. Sani, 1 second. Mr. Sani. Yes. Yes. No. The practice for such a long time, for 60, 70 years. What are you saying? What? Sit down first, one at a time. Sit down. Yes. 2:30 was made for the purpose of Muslim member for their Jummah on Friday. It was Okay, the I get your point. Yes, sir. Honorable members,
both Lok Sabha, sit down now, I'm addressing the issue. Both Lok Sabha and Rajya Sabha have members drawn from all sections of the society. Lok Sabha sits at 2 p.m. There are members from every segment. Consciously, after due deliberation, I had effected it, indicated to the House, and this was already in place on the last session. The House will meet after lunch at 2 p.m., being in conformity with the time frame indicated by Lok Sabha. Mr. Vikramjit Singh Sahni. Now, your time starts now. Honorable Chairman, don't lose sir, on I would that. like to raise a very important issue which has been a heartburn for the Sikh community since decades, because justice delayed is justice denied. As you are aware, there is an ongoing political and legal movement in Punjab at large to seek remission of life sentences handed to Sikh political prisoners, which were predominantly during militancy area. The issue is complex and multifaceted one, rooted in historical, political, and legal considerations. At the heart of the matter are the cases of individuals who were arrested and imprisoned in connection with various incidents during militancy in Punjab. सिख कैदियों को लंबा समय जेल में रखने से भारतीय न्याय प्रणाली की निरपेक्षता पर चिंता हो रही है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि बिल्किस बानो केस में 15 साल की कंप्लीशन पे ही घिनौना जुर्म करने वाले अपराधियों को रिहा कर दिया गया. श्री राजीव गांधी जी के असैसिनेट्स को भी 30 साल के बाद फ्री कर दिया गया. घिनौने जुर्म करने वालों को फ्रीक्वेंट पेरोल भी दी जा रही है आपके सामने. तो ये हम्बल सबमिशन है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म नेशनल लेवल पैरामीटर और पॉलिसी, क्योंकि भारत एक देश है, देश के प्रांतों में डिफरेंट पॉलिसी नहीं हो सकती कि कोई 15 साल घिनौना जुर्म करके 15 साल में ही रिमिशन हो गई कोर्ट में. और while deciding the premature release, so that uniformity should be maintained. Chairman sir, I would like to draw your attention कि 11 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्रिजनर्स को रिहा करने की सर्कुलर निकाला गया, और बहुत से ऐसे ये लोग मानसिक तौर पर गंभीर बीमारियों का शिकार हैं. उसमें सरदार गुरदीप सिंह खेरा, दविंदर सिंह भुल्लर, बलवंत सिंह राजौना, जिनकी डेथ सेंटेंस ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो गई है एज पर द लेटर विच आई एम लेइंग ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट 11 अक्टूबर 2019, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई. तो ये बंदी सिख्स जो हैं, पंजाब में एक मूवमेंट चल रही है पंजाब की शांति के लिए, सद्भावना के लिए. ये बहुत जरूरी है कि जिन सिख बंदियों ने 30 साल 32 साल गुजार लिए हैं, उनका कंडक्ट ठीक है, और इसमें many of them are facing serious physical and mental healthness. So release of Bandi Sikhs will be a necessary step in addressing historical injustice as means of fostering reconciliation and social healing in Punjab. मैं भारत के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी को प्रार्थना करता हूं कि एक जल्दी हाई पावर्ड कमेटी बना के इन केसेस का रिव्यू करके इनका निर्वाण किया जाए. जो बंदी सिख्स 30 साल से वहां है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुर्जा पुर्जा कट. समय खत्म हो चुका है. माननीय विक्रमजीत सिंह साहनी जी, सिर्फ 3 मिनट प्लीज. अब माननीय श्री सकलदीप राजभर जी, नीड टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ बाय एस्टेब्लिशिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ बिहार. माननीय सभापति जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिए, इसके लिए मैं आपके प्रति दिल से आभार व्यक्त करता हूं. माननीय महोदय जी, आज हम इस अमृत काल में बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि जहां के माननीय जयप्रकाश नारायण जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एवं चित्तू पांडे, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह आदि के अनेक अमर शहीद जिन्होंने बलिया को सबसे पहले लड़कर आजाद कराए, जहां गंगा और सरजू नदियों का संगम होता है, ऐसा क्षेत्र आज विकास विहीन है,
भारत के पूर्वोत्तर राज्य बिहार व उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी क्षेत्र एवं कुछ झारखंड के क्षेत्र में आजादी के 77 वर्षों के बाद भी कोई फैक्ट्री या कारखाना या भारी उद्योग नहीं है। कोई देशी विदेशी निवेश करने वाले भी नहीं है। बिल्कुल ही पिछड़ा और अनदेखा क्षेत्र है। आज स्थिति यह है कि उक्त क्षेत्र के शिक्षित अशिक्षित बेरोजगार नौजवान अपने गरीबी की वजह से अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए देश के मेट्रो शहरों में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पंजाब, हरियाणा आदि अनेक शहरों में जीविकोपार्जन के लिए रोजगार की तलाश में घर छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाता है। यही नहीं, अपने बाल बच्चों को दो तीन साल के लिए परिवार से नाता तोड़कर कुछ पैसा कमाता है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भेजता है। लेकिन यह नहीं जान पाता है कि हमारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई या भरण पोषण ठीक ठाक हो रहा है अथवा नहीं। परिवार से लगाव टूटने की वजह से बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा ठीक नहीं हो पाती है और वही पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रह जाते हैं। भूखमरी व बेरोजगारी का अंदाजा तब चलता है जब ट्रेन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से शहरों की ओर जाती है। माननीय महोदय जी, ऐसी सूरत में उसे अविकसित और विषम परिस्थितियों को देखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि उक्त क्षेत्र में कल कारखाना, फैक्ट्री या मिल या कोई भारी उद्योग होता तो वहां के नौजवानों को मेट्रो शहरों में विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता और अपने परिवार के साथ रहकर अपने बाल बच्चों की सही लालन पालन करता। साथ ही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होता। अतः माननीय महोदय जी के माध्यम से अपनी सरकार व राज्य सरकारों से मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्रों में भारी उद्योग या कल कारखाना और देशी विदेशी निवेशकों से निवेश कराने की कृपा की जाए, जिससे उक्त क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री सकलदीप राजभर जी। माननीय सदस्यगण, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बोलें, उस विषय पर लिखित भाषण पहले से तैयार न पढ़ें। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, डिमांड टू इंक्लूड ऑल नवोदय विद्यालय एम्प्लॉइज अंडर CGS pension scheme. Yeah, Deputy Chairman ji, the issue is the same. This Navodaya Vidyalaya, since 85, I think, it is there all over India. It's a wonderful experiment, and it has won a lot of sidelines, rural students are nowadays, after passing out the Navodaya, they are in good positions. Issue is the teachers and the employees, they are not in this pension scheme. A lot of years saying everything saying the parliamentary, even parliamentary committee also given the recommendation. Now it is still with the finance department. So thousands of employees are waiting for this one. So all other institutions by government of India, they are getting this pension and other facilities. But why this is lagging? That was my point. And I hope this one, instead of before they are coming out with this one, Chalo Parliament and Parliament blockade, please consider this one as early as possible. That is my demand. Thank you. Thank you. Thank you, माननीय श्री अब्दुल वहाब जी। श्रीमती सुलता देव जी, request to revise the financial assistance given under PMAYU. शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन सर। करीबन 1.5 साल होने के बाद आज मेरा पहला बार 0 आवर लगा, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और परमिशन देने के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला कि सब गरीब के सर के ऊपर छत होना चाहिए और PMAY का योजना का शुरुआत हुआ था 2015 में। 2015 में PMAY के लिए 1.5 लाख रुपए का प्रावधान हुआ है और देखा जाए तो ये अर्बन में और रूरल में देखे तो जो IAP डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसके लिए 1.20 माने 1,20,000 का, और अगर देखा जाए तो और जो नॉन IAP है उसमें 1,10,000 का।
2015 में जो 1.5 लाख था और 1,20,000, 1,10,000 था, वो आज 8 साल बढ़ गया है और सारे कमोडिटी का रेट, सारे चीज का रेट बढ़ रहा है। अगर सारे चीज का रेट बढ़ रहा है तो ये असिस्टेंट रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है उसके लिए छत के लिए फिर पैसा जब ज्यादा खर्चा हो रहा है उसके हाथ से, वो बेचारा कहाँ से लाएगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर 8 साल में सीमेंट को देखा जाए तो फिर वो 30 से 40% बढ़ा है। अगर नॉन एग्रीकल्चर लेबर कॉस्ट देखा जाए तो वो भी 30 से 40% बढ़ा है। स्टील का देखा जाए तो 100% बढ़ा है। और सब चीज का, सारे चीज का जो रेट है वो बढ़ रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ रहा है। सबका रेट बढ़ने के साथ साथ अगर देखें तो कॉस्ट नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए। कॉस्ट नहीं बढ़ेगा तो बेचारा कभी वो घर है ना, वो गरीब का घर है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आपसे ये, आपके माध्यम से सरकार से ये विनती है, अनुरोध है कि जो देखा जाए तो 1.5 लाख का एक हाउस के लिए 330 फीट स्क्वायर फीट का हाउस के लिए कम से कम 4 लाख रुपया खर्चा होता है। आपका जो सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंट बढ़ाना चाहिए, कम से कम 3 लाख हो तो कभी गरीब अपना एक छोटा सा झोपड़ी का घर से वो आके छत का घर बना सकती है, रह सकती है। और हमारे वहां पर उड़ीसा में जो MGNREGA में 95 डेज का उसमें ऐड किया जाता है लेबर कॉस्ट, और जो जल्दी काम खत्म करते हैं 2 महीने का अगर काम खत्म करते हैं उसको 20,000 रुपया इंसेंटिव दिया जाता है। जो 4 महीने के अंदर काम खत्म करते हैं उनको 10,000 का इंसेंटिव दिया जाता है। मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि ये कॉस्ट ज्यादा बढ़ाया जाए, सो दैट जो गरीब लोग हैं उन लोगों को छत बनाने के लिए, सर के ऊपर छत बनाने के लिए, PMI घर बनाने के लिए उनको सहज हो और सरल हो। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे सारे जो सांसद है, सारे जो साथी सांसद है, ये इस बात से सहमत होंगे। धन्यवाद श्रीमती सुलता देव जी, धन्यवाद। माननीय श्री सुजीत कुमार जी, डिमांड फॉर इंक्रीज गारंटीड डेज ऑफ वर्क फ्रॉम 100 days to 150 days in 10 aspirational districts and backward districts of Odisha. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, through you, I would like to request and urge the Government of India to increase the guaranteed number of work days under MGNREGA scheme from 100 to 150 days in all the aspirational districts and blocks of Odisha. Sir, in year 2014, Ministry of Rural Development, Government of India, sir, had taken a very significant step which has solidified the livelihood of all those citizens who received pattas under the Forest Rights Act 2006. Sir, through this directive, sir, about 8 lakh beneficiaries benefited, including 3.2 lakh from the state of Odisha alone. And sir, the number of work days was increased from 100 to 150 for these 8 lakh beneficiaries. Highly commendable steps, sir, which solidified the livelihood security, boosted the income and food security of the beneficiaries. But sir, still a large number of citizens, particularly from the SC/ST communities, are left behind in the state of Odisha. Sir, there are over 1 crore ST population in the state of Odisha, which is roughly 23% of our population. We have the largest number of scheduled tribes in the country, sir, 62, and we also have the largest number of PVTGs, particularly vulnerable tribal groups, 13. So, sir, a large section of this population is still deprived of this enhanced benefit, sir. So, sir, this is causing, sir, seasonal unemployment, distress, migration. So, sir, my request and my sincere request to the government is to look into this. Sir, I'll now mention about a very commendable step which the government of Odisha took in the year 2020 by enhancing the additional work days from 100 to 200 in 20 blocks in 4 aspirational districts of Odisha. But we have many more aspirational blocks and districts, sir, which are yet to be covered. And this 200 days enhancement was further enhanced to 300 days. But, sir, being a state with limited resources, we can only do so much. So my request to Government of India is, sir, to sanction adequate fund to the state so that we can cover this additional work days under MGNREGA to all the aspirational districts and all the aspirational blocks of Odisha. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय सुजीत कुमार जी। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा, the success of PM Ayushman Yojana in delivering universal health coverage. माननीय कार्तिकेय शर्मा,
Absent. Mani Shri Lieutenant Governor Dr. D.P. Vats retired. Request to fill up the left out ex-servicemen vacancies by Agniveer. Thank you, sir. With your permission, मैं अग्निवीरों के लिए पूर्व सैनिकों की छूटी हुई रिक्तियां भरना के लिए दरखास्त करता हूं। केंद्रीय और राज्य सेवाओं में ग्रुप सी और डी में पूर्व सैनिकों के लिए औसतन 10 से 14% आरक्षण है। ये मैं स्टेट्स और सेंटर की बात कर रहा हूं, जिसमें से 2 से 3% का लाभ पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं यानी वीर नारियों और उनके आश्रितों सहित लिया जाता है। यानी फिलअप जो वैकेंसीज हैं वो 2 से 3% रहती हैं और बाकी छूट जाती हैं। अब आगे आगे क्या होगा कि जैसे अग्निवीरों की संख्या बढ़ती जाएगी और पूर्व सैनिकों की घटती जाएगी। इसका कारण ये भी है कि 1 रैंक 1 पेंशन मिलने के बाद रिटायरमेंट इज एज गुड एज सर्विस। मैं जब रिटायर हुआ मेरी तनख्वाह आज जो मुझे पेंशन मिलती है उससे कम थी। तो इसलिए एक तो ये बात है, दूसरी पहले एज का रिलैक्सेशन के साथ साथ क्वालिफिकेशंस का भी रिलैक्सेशन होता था एक्स सर्विसमैन को, जिसमें सिविल सर्विसेज भी आती थी। अब सिर्फ एज का रिलैक्सेशन है, क्वालिफिकेशन का रिलैक्सेशन नहीं है। तो खासकर फिजिकल एक्टिविटी में और क्वालिफाइंग मार्क्स में 40 साल की उम्र में एक्स सर्विसमैन एक 22 साल के जवान के साथ compete करने में दिक्कत होती है। तो मोस्टली वैकेंसीज बच जाती हैं। मेरी प्रार्थना ये है आपके माध्यम से कि ये लेफ्ट आउट जो वैकेंसीज हैं, आई अगेन मीन लेफ्ट आउट, जो आश्रितों तक अवेल हो चुकी हैं उससे बच गई, उनको अग्निवीर को ऑफर किया जाए इन एडिशन टू दी रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर। ये अग्निवीर जो स्कीम है उसको बहुत आकर्षक बनाएगा। और अग्निवीर क्योंकि युद्ध अपना स्वरूप चेंज कर चुका है, आज के दिन दर्जी की दुकान पे भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है, स्कूलों में भी हो जाता है, इसलिए अग्निवीर एक समय की मांग है। थैंक यू सर। थैंक यू। माननीय श्री आर गिरिराजन, डिमांड टू प्रोवाइड रुपीज 2,500 crores exclusively for construction of flyovers at Chennai. Thank you, sir. With your kind permission, Chennai megacity has over 10 million people and a large migrant population from within and outside Tamil Nadu. With over 50 lakh two-wheelers, 10 lakh three-wheelers and 7 lakh four-wheelers, Chennai is home to the second largest vehicular population in India. The total road network in Chennai megacity is 2,780 kilometers. During 96 and 2001, our visionary leader Dr. Colonial constructed several flyovers to reduce the traffic congestions in Chennai. There are 52 functional flyovers in the city and 32 bridges. Catering to the city's homogeneous vehicular population, in addition, 36 flyovers are in pipeline. Our Honorable Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, has taken appropriate measures to improve the infrastructure developments in Chennai. At the moment, Chennai requires many flyovers between stagingly important places. A 4-lane elevated flyover on Anna Salai from Thanambet to Saidapeta will be taken up for construction at an essential cost of 621 crore in the coming year. The flyover will be the modern engineering marvel and improve road safety and ease out traffic congestion at several major junctions. Likewise, there is an urgent need for the construction of 9 flyovers in Greater Chennai region. DPR for building 6 bridges, flyovers and an elevated 4-lane road from Lighthouse to Gindi in under progress. Construction of 2 U-shaped flyovers at Indranagar Junction and Title Park Junction and Rajiv Gandhi Sala is underway, and rupees 108 crore was allotted for it.
The proposed flyover and Madhya Kailash junction is in the pre-construction stage and the civil work will commence soon. A total of 46 crore has been earmarked for this project. Apart from this, the municipal administration department is planning to build 5 flyovers bridges at Vallur Kotam junction in Nungambakam, 98 crore. ROB at Korukupeta in place of LC gate on Manali, rupees 105 crore. An elevated bridge at Chinnanolambur across Comb River linking Union Road with Punamalli, rupees 200 crore. Flyovers at Jeevan Nagar and Ashburn Garden Colony near Kill Park, 7 crore. A flyover MKN Road, Alandur and Officers Training Colony, OTA on GST Road is as planned. Therefore, I urge the government to provide 2,500 crores exclusively for the construction of flyovers at important roads and junctions to ease the vehicular traffic in Chennai mega city. Thank you, sir. Thank you. Manya Shri Harnath Singh Yadav ji, need to impose uniform civil code in the country to maintain communal harmony. माननीय सभापति जी, संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की बात कही गई है, परंतु मुस्लिम, ईसाई आदि अल्पसंख्यक समाज की 10 करोड़ से अधिक माताएं, बहनें, बेटियां हैं, जिनसे कुछ जाहिल ताकतों ने उनसे इज्जत और सिर ऊंचा उठाकर चलने के अधिकार को छीन लिया है। सवाल यह है कि आखिर उनके साथ उनका ऐसा क्या अपराध है कि उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। महोदय, धर्म, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना एक जघन्य अपराध है और संविधान की मूल अवधारणा का अतिक्रमण है। महोदय, समान नागरिक आचार संहिता किसी पूजा पद्धति या विवाह पद्धति से कोई दूर का संबंध नहीं है, इसका सीधा संबंध इंसानियत से है। महोदय, समान नागरिक संहिता लागू होने का मतलब है कि हिंदू बहन बेटियों की तरह मुस्लिम, ईसाई आदि सभी वर्गों की बहन बेटियों के लिए विरासत और वसीयत का अधिकार समान होगा। निसंतान पति पत्नियों को अपनी वंश परंपरा आगे चलाने के लिए बच्चा गोद लेने का अधिकार समान होगा। हिंदुओं के समान सभी वर्गों के विवाह की उम्र एक समान होगी। विवाह विच्छेद का तरीका और आधार एक समान होगा। विवाह विच्छेद होने पर किसी बहन बेटी के दर दर भटकने के बजाय हिंदुओं की भांति गुजारे, भत्ते और भरण पोषण का आधार एक समान होगा। मतलब हिंदुओं के समान एक पति, एक पत्नी, एक विवाह का अधिकार एक समान होगा और हिंदुओं की भांति पैतृक संपत्ति में पुत्र, पुत्री, बेटा, बहू को समान अधिकार होगा और विवाह विच्छेद की स्थिति में विवाह उपरांत अर्जित संपत्ति और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, प्लीज समान अधिकार प्राप्त होगा। महोदय, चिंतन का विषय यह है कि सभी महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देने के किसी मजहब को खतरा कैसे पैदा हो जाता है, उसकी पवित्रता कैसे नष्ट हो जाएगी। महोदय, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक स्तंभ स्थापित किए हैं और इस यात्रा में नारी शक्ति बंधन कानून का निर्माण और 3 तलाक प्रथा की समाप्ति आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगी। महोदय, आज आवश्यकता है कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी आज 10 करोड़ बहन बेटियों को के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जो मानवीय गरिमा को स्थापित करती हो और उसकी सुरक्षा करती हो तथा एक सभ्य समाज के मानकों पर खरी उतरती हो। अतः मैं सामाजिक एकता, सांप्रदायिक एकता और पारस्परिक सौहार्द को स्थापित करने के लिए सरकार से समान नागरिक संहिता शीघ्र लागू करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य का प्लीज, मैंने आपने सही कहा, पर मैं सारे सदस्यों से मैं आरंभ में यह निवेदन कर चुका हूं कि you are not supposed to read, but you are supposed to speak। पर सारे सदस्य लगभग इसी रास्ते पर है। प्लीज लो। माननीय सुश्री इंदु बाला गोस्वामी, नीड टू क्रिएट एक्स्ट्रा स्टॉपेज ऑफ वंदे भारत एट पठानकोट रेलवे स्टेशन, प्लीज। धन्यवाद उपसभापति जी। बोले प्लीज। धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष वंदे भारत ट्रेन संख्या 22-439/22-440 पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर ठहराव के संबंध में निवेदन करना चाहती हूँ।
वंदे भारत दिल्ली से कटरा आते और कटरा से दिल्ली जाते हुए पठानकोट से गुजरती है, किंतु इस स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण रूट है जिसमें पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पंजाब, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा व जिला कांगड़ा के लोगों के लिए एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। साल भर भारी संख्या में श्रद्धालु देश के हर कोने से मां वैष्णो माता के दर्शनों के लिए जम्मू आते जाते हैं। इसके पश्चात अधिकतर लोग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हेतु मां ज्वालामुखी, मां बगलामुखी, नयना देवी, चिंतपूर्णी, मां चामुंडा देवी, मां ब्रजेश्वरी व शिव मंदिर बैजनाथ आते हैं। वंदे भारत ट्रेन के पठानकोट कैंट स्टेशन पर ठहराव न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं व पर्यटकों से वंचित रह जाते हैं। पठानकोट स्टेशन पर वंदे भारत ठहराव से हिमाचल के धार्मिक पर्यटन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन देश की पहली ऐसी रेल सेवा है जिसमें प्रीमियर सफर का सबसे अधिक ख्याल रखा गया है। इसलिए उपरोक्त रूट पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हिमाचल प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। अतः मैं माननीय रेलवे मंत्री जी से मांग करती हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव कम से कम 2 मिनट के लिए पठानकोट कैंट स्टेशन पर करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, कंसर्न ओवर alleged prevalence of casteism Thank you, and sir. discriminatory practice in Central University. Sir, I would like to draw the attention of this august house towards a pressing incident that needs an immediate intervention from the union government. Sir, I have gone through a answer given by the Honorable Minister in the Lok Sabha, which reveals that about 13,626 students from the scheduled caste, scheduled tribe, and other backward community have dropped out central universities, Indian Institute of Technology, and Indian Institute of Management during the last 5 years. The Honorable Minister also give a breakup of the students who have dropped out of various institutions. Around 4,596 OBC candidates and 2,424 SC and 2,622 ST students dropped out of central universities. And in the past 5 years, as many as 2,666 OBC candidates, 1,068 SC and 408 ST students dropped out from IIT, and 163 OBC and 188 SC and 91 ST candidates dropped out of IIM in the same period. The minister is giving an explanation that the students have various options for going for other programs, and that is why this happened. But only OBC, SC, ST students have this option, sir? Why is this happening only for these students? Sir, it should be noted that our major institutions, prestigious institutions like IIM and IIT, were in the headline due to caste discriminations and other discriminatory activities. These students are faced by serious issues during their study. Therefore, the rate of suicide in the campus is also very high in this period, sir. I have a statistics on that also. In December 2021, sir, the Union government has told Parliament that 122 students had died by suicide at higher education institutions under the center between 2014 and 2021. Of the 120 students, 24 belong to the SC communities, 3 were STs, and 41 were OBCs. We have not forgotten about Rohit Vemula, sir. His suicide note is very clear. My birth is my fatal accident. This was by Rohit Vemula, by his suicide thoughts. Sir, I urge the government of India to take immediate step, intervene it, to address the concern on this discrimination and marginalization of within the education. Thank you. Thank you. There are various options.
Thank you. It's not going on record, you know, Pramod ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Not going on record, K.C. Venugopal ji. Not going on record. You know, 3 minutes, please. Thank you. Thank you. जो माननीय सदस्य एसोसिएट करना चाहते हैं, काइंडली सेंड योर नेम हियर. सेंड योर नेम हियर. माननीय श्री संजीव अरोड़ा. माननीय श्री संजीव अरोड़ा डिमांड टू मेक आयुष्मान स्कीम मोर इफेक्टिव बाय इनेबलिंग पुअर टू गेट फुल बेनिफिट्स. थैंक यू वाइस चेयरमैन साहब फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. आप सब जानते हैं कि इस उसमें जब आपका मैटर विद परमिशन ऑफ चेयर एक्सेप्ट होता है, सिर्फ 3 मिनट बोल सकते हैं और वो रिकॉर्ड पर नहीं जाता. आपको बार बार मुझे बताना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता. नहीं, माननीय संजीव अरोड़ा, आपकी बात जाएगी रिकॉर्ड पे. कुछ और प्रमोद जी. Thank you, Vice Chairman Saab, for giving me opportunity to speak on a very important issue, which is regarding Ayushman scheme launched by government. And I am talking from the official numbers. From the official numbers of Ayushman scheme, the average spent on every patient is 12,000 rupees, whereas the approved amount is rupees 5 lakhs for every family. So 12,000 is less for 2 reasons. First of all the hospitals which can take care of critical care are not empaneled with Ayushman. And so which means now the average bed size of hospitals empaneled under Ayushman scheme is 48. So which means only smaller hospitals are empaneled and the bigger hospitals which can take care of critical illness is not. They are not. So my request to the government is to make bigger hospitals compulsory for empanelment, at least those hospitals which are taking benefit from the government, like that of which have medical colleges and which take income tax exemption, because poor patients are not getting treatment to the extent promised in Ayushman scheme. And also the cost of treating, which have been approved in Ayushman scheme, is very less. So private hospitals, corporate hospitals, they do not want to get themselves empaneled. And that is why the patients do not get the best possible care under this scheme. So my request to government is to make some hospitals compulsory, increase the charges to some extent in Ayushman, so that all the poor people are covered. Thank you. Thank you, Mani Sanjeev Arora ji. Mani Sri Neeraj Dangi ji, need to amend newly implemented circular of Reserve Bank of India circular dated 17th March for auditing of banks. बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय. भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में 20 करोड़ से अधिक के एडवांस वाली शाखाओं का 100% ऑडिट एवं 20 करोड़ से कम एडवांस वाली शाखाओं का 20% ऑडिट रोटेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा करवाया जाता रहा है. 2020-21 में ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए उसके मद्देनजर कराई जाने वाली ऑडिट के प्रावधानों के अंदर पैरामीटर्स के बदलाव का आग्रह आरबीआई से किया और आरबीआई ने उसे स्वीकार करते हुए एडवांस को बेस मानते हुए सिर्फ 90% एडवांसेस की ऑडिट करने का नया प्रावधान दिया. इसी प्रकार एक परिपत्र 17 मार्च 2022 को जारी किया गया, जिसमें इन एडवांसेस के 90% ऑडिट वाले प्रावधान को घटा करके 80% कर दिया गया. इस नए प्रावधान से लगभग 50% बैंक शाखाएं जो है ऑडिट के दायरे से बाहर हो गई और इस वजह से देश ये परिस्थितियां इस नए प्रावधान से इस तरह से बन गई जो कि बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से ये अनुकूल नहीं है और ना ही जमाकर्ताओं के ये हित में भी है नया प्रावधान. वर्तमान परिदृश्य में आए दिन बैंक घोटाले सामने आ रहे हैं और लगातार वित्तीय अनियमितताओं के चलते हुए प्रतिदिन बैंक लाइसेंस जो है रद्द किए जा रहे हैं. ऐसे में जमाकर्ताओं की
खून पसीने की गाढ़ी कमाई और बुढ़ापे का सहारा बैंकों में डूब रहा है और आगे भी डूबने के आसार हैं। अतः जनहित व राष्ट्रहित में वित्त मंत्रालय व केंद्र सरकार से माननीय उपसभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन है, अनुरोध है कि आरबीआई को निर्देशित किया जाए और इन नए प्रावधानों को वापस लेकर के पुराना जो ऑडिट सिस्टम है उसको रिस्टोर कराया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय नीरज डांगी जी। माननीय श्री पवित्र मार्गेरिटा नीड टू इनिशिएट ए ग्लोबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन अंडर दूरदर्शन। Namaskar, sir. Honorable Chairman, sir. As I speak in this August House today, flames of war have been raging in two parts of the world. Millions of people are going through unspeakable suffering in these wars. Along with the human casualties, the truth also becomes the casualty in these wars. I've been observing in fascination, sir, that the various global media organizations have been presenting versions of truth that suit them the most. It's true that these conflicts are occurring on faraway shores today, but I shudder to think what kind of roles some of these so-called global media organizations will play if countries like India get drawn into a conflict. Even an organization like BBC's agenda gets exposed when they unreasonably target a democratically elected world leader on fictitious allegations. These developments only illustrate that a handful of global media outlets continue to dominate the flows of international news and keep targeting emerging countries like our India. इसे बदलना होगा. There is a demand and we have resources in abundant supply. What the world needs today is a truly global media organization that doesn't push agendas against countries like India. India has an unparalleled pool of talent engaged in more than 1 lakh registered newspapers, 400 news channels, and uncountable other media entities. What we need now is to leverage the power of this workforce to create a media outlet that has international presence and acceptance. And I think our Prasar Bharati's Doordarshan and Akashvani maybe can be the best answer. As a member of this August House and as a former journalist, I honestly request our INB ministry for a roadmap to boost up the infrastructure and editorial capabilities along with global presence of Doordarshan so that the organization is able to collect and disseminate news from all over the world and to the world. Chairman sir, भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी कूटनीति की बुनियाद है. पक्षपात करने के बजाय हम राष्ट्रों के बीच सद्भाव लाने के प्रयास करते हैं. वसुदैव कुटुंबकम इज आवर मंत्र. ऐसे में यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया को एक सच्चा बेसिक मीडिया संगठन देने के लिए भारत से बेहतर कोई नहीं है. वी हैव कंटेंट, वी हैव टैलेंट एंड वी हैव टेक्नोलॉजी. और अभी ये संभव है क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है. Thank you, sir. धन्यवाद. माननीय श्रीमती दर्शना सिंह जी, डिमांड टू इंक्लूड चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर बाना सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट. धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया. महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद चंदौली कृषि प्रधान जनपद है, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है. चंदौली जनपद एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी में काले चावल के लिए चयनित है. भारत सरकार द्वारा जनपद चंदौली जिले को आकांक्षी जिले के रूप में चयनित किया गया है, किंतु सिंचाई की उचित प्रबंध न होने के कारण किसानों को धान की रोपाई में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है. महोदय, जनपद चंदौली में सिंचाई हेतु पानी के समुचित प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की बाढ़ सागर परियोजना में चंदौली को शामिल किया जाना किसानों के लिए अति आवश्यक है. महोदय, चंदौली जनपद में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. किसानों को सिंचाई हेतु नारायणपुर
पंप कैनाल से पानी की आपूर्ति संभव नहीं है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि केंद्र सरकार की बाढ़ सागर परियोजना द्वारा संचालित नहर को जरगो बांध से मूसा खाड़ बांध नौगढ़ चंदौली से जोड़ दिया जाए तो लतीफ शाह बैराज से कर्मनाशा लिफ्ट नहर के माध्यम से पूरे चंदौली जिले को सिंचित किया जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, कंसर्न फॉर राइजिंग केसेज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट अमंग इंडियन यूथ। सर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया है। सर, आज सवेरे ही जब मैं पार्लियामेंट में आने की तैयारी कर रही थी, पता चला कि एक मेरे परिवार से परिचित एक 36 साल के युवा हैं जिनकी क्रिकेट खेलते खेलते अचानक ही हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। और आज ही के दिन मुझे ये मुद्दा रखने को मिल रहा है, तो मैं आपकी खास करके आभारी हूँ। जो राइजिंग केसेस हैं इंडिया में सडन हार्ट अटैक्स के, वो एक चिंता का विषय है और मैं आपके जरिए हेल्थ मिनिस्ट्री को कहना चाहूंगी कि इस पे थोड़ी ज्यादा रिसर्च कर एक डेटा बनाकर कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उसको लेकर थोड़ा रिसर्च बैक्ड हमें फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कैसे हम लोग जो सडन हार्ट अटैक्स लेस देन 50 ईयर ओल्ड्स के हो रहे हैं, कैसे उसको काबू में ला सकते हैं। वैसे ही लैंसेट की स्टडी बताती है कि इंडिया में 5 से 6 लाख इंडियंस की अचानक से हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो जाती है और वो 50 साल से कम उम्र के हैं। ये सिर्फ उनके परिवार के लिए ही दुख का विषय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुख का विषय है। तो एक डेटाबेस बनाने के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और रोज अखबारों में आता है कि कोई डांडिया खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाती है, कोई हार्ट कंडीशन नहीं है, कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है हार्ट को लेकर, पर वो उनके अचानक से डेथ होती है। कल ही डॉक्टर प्रशांत नंदा जी ने इस मुद्दे को रखा था। उन्होंने बताया था ट्रेन में एक 38 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। तो इस पे भी खास करके ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी सर, फाइजर की वैक्सीन जो अमेरिका में काफी लोगों को लगाई गई थी, अब आकर जब उन पे दबाव पड़ा है, उन्होंने बताया है क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो शायद हमें इस पे भी आत्मचिंतन करने का विषय है कि जो वैक्सीन लगाई गई या कोविड का जो गंभीर स्वरूप जो लिया गया, जो मेडिसिन हमारी तरफ से प्रिस्क्राइब की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से आई थी, क्या उसमें कहीं कमी रह गई। साकेत गोखले जी हमारे बगल में बैठे हैं, 34 साल की उम्र में विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज उनको हार्ट अटैक आ जाता है। उनके डॉक्टर बताते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपके माध्यम से सर मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इस पे खास करके ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके गाइडलाइंस दिए हैं, पर वो इतने पुख्ता नहीं है कि इस इशू को एड्रेस कर पाए। आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे ये कहने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद श्रीमती प्रियंका जी। माननीय श्री राजीव सुख, माननीय राजीव सुख, माननीय राजीव सुख नहीं, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी, डिमांड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट जन औषधि केंद्र। बोलिए बोलिए बोलिए। उपसभापति महोदय, 2015 में बहुत जोर शोर से ये प्रचार किया गया, कहा गया कि जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वहाँ गरीब लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध होगी। लेकिन हमने जो देखा है कि बीपी की, मधुमेह की जो दवा है जिसको 100 रुपये में मिलनी चाहिए, वो 3000 रुपये में मिल रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जन औषधि जितनी दवाएं हैं, खुले हैं दुकानों में, उस सस्ती दर पर, सस्ते भाव पर गरीबों को वितरित करनी चाहिए और दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दवाएं उपलब्ध नहीं है और उन दुकानों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एलोपैथिक की दवाएं हैं, अंग्रेजी दवाएं हैं, वो बिक रही हैं, बिकती हैं और बिक रही हैं। इसको अंग्रेजी दवाओं को वहां से हटाया जाए और सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराई जाए। आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध है। धन्यवाद। माननीय विजयपाल सिंह तोमर, माननीय विजयपाल सिंह तोमर। धन्यवाद माननीय सभापति कंसर्न ओवर एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम्स। हाँ,
महोदय, आज शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना मुश्किल हो गए हैं। 25% से लगाकर 80% तक अडल्ट्रेशन हो रहा है। दूध में, सब्जियों में, खाने पीने की चीज में, हर चीज में अडल्ट्रेशन है। मान्यवर दूध में अरारोट, सपरेटा पाउडर मिलाना और नकली मावा ये आम बात हो गई है। उबले हुए आलू, शकरकंद और सपरेटा का खोया बनाया जाता है। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, श्रीपाद यशो नाइक जी, टेबल ऑफ द हाउस और द पेपर्स मेंशन माय नेम एट टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। क्या हुआ क्या है? आप बैठ जाइए, आप बैठिए, बैठ जाइए प्लीज। क्या हुआ? बैठ जाइए। आइटम नंबर 3, श्री एसपी सिंह बघेल। कार्ड सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागज हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के पत्रों पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री अजय भट्ट जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 4 पर माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी के नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण मैं सभा पटल पर रखता हूं। थैंक यू। आइटम नंबर 5, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी। With your permission, I raise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 6, डॉक्टर भारती पवार जी। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7, श्री विनोद कुमार सोनकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से मैं आचार समिति का पहला प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पे रखता हूँ। आइटम नंबर 8, श्री राजीव रंजन सिंह जी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन विषय पर विभागों से संबंध आवासन के ऊपर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9 श्री के मुरलीधरन जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, नहीं हुआ। आइटम नंबर 10 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, Sabhapati Mode, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 11th of December 2023 will consist of consideration of any item of the government business carried over. Today's order paper, it contains the discussion and voting of the first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 and introduction, consideration, passing of the appropriation number 3 bill 2023. आइटम नंबर 9 श्री के मुरलीधरन जी, Sir, I rise to lay on the table a copy each of P61, P62 and P63 reports of the department related Parliamentary Committee on Transport, Tourism and Culture at serial number 9 in today's order paper. कृपया बैठ जाइए। अभी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, केवल सदन के पटल पर प्रस्तुत हुई है, उस पर निर्णय सदन करेगा। Chairperson, sir, with your permission, Please listen. I rise. Honorable Minister is reading. I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 11th of December 2023 will consist of consideration of any item of the government business carried over from the today's order paper. It contains discussion and voting on first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 and introduction, consideration and passing of the appropriation number 3 bill 2023, discussion and voting of on the demands for excess grants for the year 2021 and introduction, consideration and passing of the related appropriation number 4 bill 2023 and third, consideration and passing of the post office bill 2023. Consideration and passing of the following bills. Number 1, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Number 2, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. Number 3, Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. Number 4, the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. And 5th, the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2023. Next, consideration of passing of the press and registration of the periodical bill 2023 as passed by the Rajya Sabha. Number 4, the consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1, the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 and the Provisional Collection of Taxes Bill 2023. Next, the consideration and passing of the Chief Election Commissioner and other election commissioners' appointment, condition of service and term of office bill 2023 after it is passed by the Rajya Sabha. Thank you. Please sit down. Sit down. अभी सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो उसके समाधान के लिए हमने पोर्टल विकसित किया एक, और उस पोर्टल के माध्यम से वो किसान अपने कस्टम हायरिंग सेंटर के CSC के ऊपर जाकर भी वो उसके साथ अपने आप वहां जाकर भी अपने नाम को जुड़वा सकता है। और उसके साथ ही अगर उसकी समस्या है तो उसके लिए वो उसके अंदर KYC के माध्यम से एक किसान 100 किसानों को भी जोड़ सकता है। अधिकारी को भी ये पावर दिया कि वो 500 किसानों को उसके साथ जोड़ सकता है, और लगभग इससे 20 लाख किसानों को KYC का लाभ डायरेक्ट इनसे जोड़ा गया है। और मैं इसमें ये भी बताऊं कि अभी तक जो इन्होंने कहा कि किसान मित्र, इसको हमने 5 भाषाओं के अंदर बनाया है, जिसमें 5 भाषा के अंदर वो अगर डैशबोर्ड के ऊपर या मोबाइल पे लिखते जाएंगे तो उनको तुरंत उसके ऊपर जवाब मिलता भी जाएगा। और ऐसे लगभग हमने फोन कॉल्स है वो लगभग 1,55,000 फोन कॉल्स हुए, जिसमें आवाज पर सीधा है लगभग उसमें भी 2 करोड़ से 24 करोड़ से अधिक बार इस पर बातचीत हुई है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर लगातार इस पे प्रयास जारी है, और नई नई टेक्नोलॉजी से किसान को ज्यादा से ज्यादा किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उससे किसानों की इससे समस्या का समाधान भी लगातार हो रहा है। श्री जयंत चौधरी। धन्यवाद सभापति जी। अभी मंत्री जी ने रजनी जी के सवाल के जवाब में ये बात स्वीकारी कि जैसे KYC का उन्होंने नॉर्म और आधार को सबमिट करने का नॉर्म इस योजना में लाए हैं, तो लाभार्थियों की संख्या घट गई, यानी जो पात्रदार पहले नहीं होने चाहिए थे उनको रखा गया। तो मेरा सुझाव है कि जो आगे से योजनाएं बने, पहले जो लाभार्थी हैं उनको सुनिश्चित कर लिया जाए, उसके बाद ऐसी योजना बनाई जाए। मैं सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 5 साल इस योजना को लागू किए अब होने वाले हैं। 5 साल में किसान के खर्चे, किसान की लागत, कृषि में पूंजी निवेश की आवश्यकताएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हाल में जहां बनी है, वहां भी इनके मैनिफेस्टो में भी लिखा गया था कि 6,000 रुपए को सप्लीमेंट किया जाएगा राज्य के संसाधनों के द्वारा। तो क्या केंद्र सरकार इसमें विचार करेगी कि 5 साल बाद अब 6,000 रुपए को बढ़ाया जाए? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किसान सम्मान निधि योजना पहली बार लागू की, और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर 6,000 रुपए किसान को DBT के माध्यम से मिलता है, बिना किसी बिचौलिए के मिल रहा है। और मुझे इसमें यह कहना है कि इससे किसानों को निश्चित रूप से पिछले जो किसानों की इनकम में भी इसका इजाफा हुआ है, और किसान इस योजना का लाभ लेकर जैसा कि 4 महीने बाद उसको इंतजार रहता है कि हमारे 2,000 रुपए किसान के पास आएंगे, तो उससे वो अपनी जो भी आवश्यकता की वस्तु होती है किसान के लिए, चाहे उसको बीज की आवश्यकता है या उसको कोई भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, तो तुरंत उसको इसका लाभ मिलता है। तो मुझे इसमें यही कहना है कि इसमें कई राज्यों ने ऐसे हैं जिन्होंने राज्यों ने अपनी ओर से भी किसान सम्मान निधि के साथ में एड ऑन करके जोड़ा गया है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और किसान इसका बेनिफिट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 श्री रामनाथ ठाकुर। प्रश्न संख्या 62। ऑनरेबल मिनिस्टर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 2020 के पहले, कोरोना के पहले जो ट्रेन कर्पूरी ग्राम में, सोनपुर प्रमंडल के कर्पूरी ग्राम में जो रुकती थी, मिथिला एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस, जननायक एक्सप्रेस, टाटा छपरा एक्सप्रेस, वो क्यों नहीं 2022 के बाद रुक रही है? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, ये जो विषय है ट्रेन्स के हॉल्ट का, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और थोड़ा टेक्निकल विषय है। इसमें कोई कॉमर्शियल या कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं है। इसको थोड़ा समझने की भी अगर आप अनुमति दे तो 2-3 मिनट लेके थोड़ा विस्तार में बताऊं। माननीय सभापति महोदय, बेसिकली हमें ये रेलवे और हाईवे के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझने की जरूरत है।
हाईवे में अगर बाय चांस कहीं पर भी कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम आता है तो गाड़ियां जो होती है, चाहे ट्रक हो या कार हो या कोई भी गाड़ी हो, वो आराम से डाइवर्ट होके जा सकती है जो पैच जहां पे रिपेयर करना है। ट्रेन में क्या होता है, रेलवे की पटरी स्टील की बनी हुई है जो, उसमें अगर रेगुलरली उसमें जो मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उस मेंटेनेंस की जगह मान लो कोई 12 किलोमीटर का एक सेक्शन है जिसमें ट्रेन की पटरी को रिप्लेस करना है, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि ट्रेन जो पीछे से आ रही है वो नीचे जाए, पटरी से उतरे और वापस पटरी पे चढ़ जाए उस 12 किलोमीटर पैच के बाद में। ऐसा तो संभव नहीं है। ट्रेन तो नीचे उतर के वापस डाइवर्ट होके ऊपर नहीं आ सकती। इसलिए दुनिया भर में जितनी भी रेलवेज हैं, जितने भी रेलवे सिस्टम में, उन सब में एक कॉरिडोर ब्लॉक का सिस्टम लगा होता है। यानी 24 घंटे में से 8 घंटे ज्यादातर देशों में, कई देशों में 4 घंटे और कई देशों में 6 घंटे मिनिमम रेलवे के पटरियों को खाली रखते हैं जिससे कि उसको मेंटेन कर सके। वहां पे मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो जब कॉरिडोर ब्लॉक बनाना होता है, यानी एक कॉरिडोर को 125 किलोमीटर्स के एक कॉरिडोर को आपको खाली रखना पड़ता है मेंटेनेंस के हिसाब से, तब उसमें से जो भी गाड़ी पास हो रही थी उस टाइम में पुराने टाइम टेबल के हिसाब से, उस गाड़ी को वहां पे रोकना संभव नहीं होता है, उसको निकाल देना पड़ता है उस 125 किलोमीटर के। ये प्रक्रिया अगर आप देखें 2014 से पहले, माननीय सभापति जी, बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स होते थे, 170 के आसपास एवरेज, क्योंकि मेंटेनेंस की बड़ी समस्याएं थी। तो ये बहुत एक कड़ा फैसला लिया गया था आईआईटी बॉम्बे के हेल्प से। उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की थी पूरे देश भर के नेटवर्क की, जिससे कि पूरे देश में कम से कम 3 घंटे के हर एक सेक्शन को रेगुलरली 3-3 घंटे के कॉरिडोर मेंटेनेंस के लिए मिल जाए। उसी प्रक्रिया में कई स्टॉपेजेस रोके गए और यथासंभव टाइम टेबल जैसे जैसे रेलवे की कैपेसिटी बढ़ रही है, यथासंभव नए स्टॉपेजेस भी दिए जा रहे हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री रामनाथ ठाकुर। सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री की बातों से मैं सहमत नहीं हूं। अभी उन्होंने जो कोशिश कीजिए। उन्होंने जो जवाब दिया है, लिखित जवाब दिया है कि 8 जोड़ी ट्रेनें उस पर जाती है, रुकती है, राजधानी भी जाती है। हमने एक्सप्रेस के बारे में पूछा और आपको बताऊं कि 10 बार मैंने माननीय मंत्री जी को मौखिक रूप से और पत्र के माध्यम से, और जो बात ये बोल रहे हैं, जो अफसर इनको सिखाए हैं वही बात बोल रहे हैं। मैं दूसरा सप्लीमेंट्री पूछता हूं, क्या नहीं, माननीय सदस्य, क्या माननीय मंत्री जी अफसर रह चुके हैं? हाँ, अफसर रह चुके हैं। मैं अफसर के रूप में नहीं जानता हूं, मैं मंत्री के रूप में, राज्यसभा के सदस्य के रूप में जानता हूं, और इनसे मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है, बहुत ही अच्छा संबंध है। दूसरा सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी से, क्या 1.5 महीने पहले बेगूसराय जिले में और समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी स्टेशन पर आपने बेगूसराय में 6 जोड़ी ट्रेन रोकने का आदेश दिया है और रुक रही है, और शाहपुर पटोरी स्टेशन पर 3 जोड़ी ट्रेन रुक रही है 1.5 महीना पहले से। क्या कारण है कि कर्पूरी ग्राम में जो ट्रेनें रुकती थी वो नहीं रुक रही है, और नहीं रुकने का कारण जो आपने बताया उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपसे सभापति महोदय विशेष अनुरोध के साथ, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, आरजू के साथ, विनती के साथ कि जनता को और सरकार को जो लाभ होने वाला है उस लाभ से आप वंचित मत करें, और उस स्टेशन पर आप जो ट्रेन का नाम मैंने लिया है उस ट्रेन को रोकने का आदेश आज करने का कृपा करेंगे। माननीय मंत्री जी, पर सभापति माननीय सदस्य ने बहुत भावुक रूप से, पुरजोर तरीके से, संयम रखते हुए, आपके संबंधों की चर्चा करते हुए बात कही है। मैं मान्यवर
मान्यवर सांसद जी, आप बहुत ही मेरे सम्मानीय सांसद जी हैं और पहले जब इधर बैठते थे काफी अच्छी गपशप भी होती थी, खूब आनंद भी आता था और जिस तरह की आप पहले बातें सुनाते थे बिहार की राजनीति की, उससे सीखने को भी बहुत मिला और आपके इन्हीं सब आपके प्रवचनों के कारण ही आज मुझे थोड़ी बहुत राजनीति की समझ आई, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ और माननीय सांसद महोदय का जो स्पेसिफिक विषय है, मैं माननीय सांसद महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा बैठे साथ और जो यथासंभव इसमें हो पाएगा वो करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री जवाहर सरकार। Sub question. How many halts and railway stations are not covered after COVID? After COVID, you withdrew services from many stations. Now, 3-4 years later, I'm asking specifically which stations and halts are deprived of railway stoppage. That's all. Honorable Minister. As I said, there is absolutely no relation with the COVID of this decision. The entire decision was based purely on the maintenance requirements, purely on safety requirements. And for safety, certain very difficult decisions have to be taken. This is one of those difficult decisions which has been taken. We know this has huge implication in terms of passenger convenience and all, but still this was a very important decision which had to be taken. This has nothing to do with COVID, Honorable Chairman, sir. And overall, practically every week things change as more and more tracks are added. As you would be aware, Honorable Chairman, sir, through you, I would like to let the entire House know, in the last 9 years, close to 21,000 kilometers of new tracks have been added. So once capacity is there, enough more trains can be run. That is the way we are moving in this direction. Modi ji's vision for railway is very big vision and he is implementing it in a very meticulous way. So as more capacity increases, we can have more stoppages. Shri Rajiv Shukla. श्री राजीव शुक्ला। धन्यवाद चेयरमैन साहब। ये सर बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा हो। कौन सी? कोई ट्रेन शुरू होती है, पहले तय होता है कि ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, सुपर फास्ट है, ये है वो है। बाद में धीरे धीरे उसके हाल्ट स्टेशन बढ़ते जाते हैं। अल्टीमेटली जो है 20 स्टेशन उसके बीच के रास्ते हो जाते हैं और ट्रेन बेकार हो जाती है। किसी जमाने की तूफान मेल आपको याद है कि आज सबसे ज्यादा खड़खड़िया गाड़ी हो गई है। इसी तरह सुपर फास्ट ट्रेन के साथ भी हो रहा कि पॉलिटिकल प्रेशर में या किस प्रेशर में उनके स्टेशन के जो स्टॉपेज है बढ़ते चले जाते हैं, हाल्ट स्टेशन। मेरा मंत्री से निवेदन है, क्यों ना इस पे एक आप नीति बनाए, एक प्रोविजन बनाए, उस आधार पे सिर्फ ये तय हो। ये जो है कि किसी ने कहा रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर की रिक्वेस्ट, एमपी की रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट, आप उसका स्टेशन बढ़ा देते, रुकने के स्टॉपेज, हाल्ट स्टेशन। ये पूरे देश की समस्या है और इसकी वजह से ट्रेनों को जो द्रुत गति से चलना चाहिए, फास्ट स्पीड से, वो नहीं चल पाती और उनको भी शिकायत नहीं होती, रामनाथ जी को भी। अगर इसकी कोई पॉलिसी प्रोविजन हो तो दिक्कत ना है। इसलिए ट्रेनों की आवाजाही, उनके रुकने की पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? माननीय सभापति महोदय, ट्रेन्स के हॉल्ट की और जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से एक बहुत ही एकदम क्लियरली लेड आउट पॉलिसी और क्लियरली लेड आउट टेक्निकल पैरामीटर्स पे चलती है। जो माननीय सांसद महोदय का जिस तरह से आता है रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार राजीव जी जमीन पे जाएंगे तो रिक्वेस्ट तो आते जाएंगे, लेकिन होता पॉलिसी के हिसाब से। Sir, can I make a small point for Rajiv? My good friend Rajiv, with your permission. Sir, you have problem with your friends. You have problem from your friends. Go ahead. Just two small submissions. एक तो राजीव जी से पूछना चाह रहा हूँ कि लास्ट कब ट्रेन में गए थे वो, और दूसरा सर उनसे मेरा अनुरोध है, बताएं कि उन्होंने तय कर लिया है कि आज के बाद कभी लोकसभा में ना उनको जीतना है ना उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति को जीतना है। अगर ऐसा तय कर लिया है तो जरा हमें भी थोड़ा जानकारी दे। I have a problem. 1 second. I have a problem. I can ask the minister to respond to a question of a member. I can't ask the member to reply to a question of another member. मैं 15
एक तो इनके सवाल का जवाब आर पहले ही है। गिरिराजन। पहले तो ये कि 15 दिन पहले ही मैं ट्रेन श्री आर गिरिराजन, या आप क्या आप Thank you, sir. आपस का मामला है। Thank you, sir. My request is, so many electrical motor trains has been dropped from Chennai Central to Chennai Park to Dindivanam in the time of COVID. Because Chennai has developing up to that level, Dindivanam up to Dindivanam. Because in between Dindivanam to Chennai Park, SRM college is there. So many times minister has visited there. Apart from that, Melmarutur, one temple city is there. Lot of colleges there. Therefore, we need continuously electrical motor units operation from Chennai Park to up to Dindivanam. This is my request. Kindly consider the minister. Honorable Minister. Question is very specific about a particular section of the Indian Railways. We can definitely discuss it as and when honorable member decides to come and meet me. Question number 63, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik. Honorable Minister. रखा Question number, oh, yes, I have. Yes. Again. I got that. I got afraid of them suddenly. The honorable member was not present. Shri Saket Gokhale. Supplementary on question number 63. Sir, first of all, I would like to express gratitude to you because we saw you today protecting a member and actually asking a question to the minister. So I would like to express my heartfelt gratitude to you for the way you protected the member. So through you, my question to the honorable minister is, a lot of states, especially during COVID-19 and even after that, have rejected dal and other grains that have come under the PMGKMY Yojana. So through you, I would like to ask the minister that what were the reasons for states rejecting food grains that have come under this Yojana, and what steps have been taken to ensure that high quality of food is now being supplied to different states under this scheme, sir? Thank you. Honorable Minister. Any incident of rejection of dal because we don't supply dal under PMGKY. There is no such incident that is reported to us that states have rejected the food grains. In fact, most states they are themselves procuring the food grains and distributing it in their states. I think the honorable member may kindly place some specific incident where there is a rejection of dal or whatever food grain is claiming to have been rejected. If at all there is any misdemeanor at the fair price shop level, certainly the state government should investigate that. But no incident of FCI sending any material which has got rejected is currently available with us. If he gives us some specific details, we can respond to it. If there is an instance with the honorable member, he'll share with the leader of the house. Tamil Nadu is one example. What had happened was after food grains were rejected, they went to NAFED, they instituted a committee, and NAFED after that changed the procurement process where out of 100% that is given by millers, 70% is taken and the OTR lower limit was removed. Which is why I would request the honorable leader of the house to kindly let the minister whose jurisdiction it is to respond, because he does not seem to be aware of the facts. I strongly rebut what has been said by the honorable member through you, sir. And I would like him to place that on the record on the table of the house, since he's made a very grave allegation against a very reputed organization. Please place the details on the floor of the house. One second. Honorable member, 1 second. Take your seat. One second.
1 second, honorable member, please take your seat. Take your seat. Honorable member has put in firm perspective an assertion which has been disputed by the leader of the house. The honorable member may put it on the table of the house. We'll examine it and take it next. Sri Tiruchi Siva. I take note of both. And every document which I call upon to be put on the table of the house is seriously examined. Sri Tiruchi Siva. Thank you, Chairman, sir. Sir, keeping in view of the welfare of the beneficiaries of PMGK, the Government of India decided to continue to provide food grants to 81.35 crore beneficiaries with an outlay of 11.8 lakh crores, sir. Very much appreciable. And the whole subsidy is borne by the Government of India. My simple question is, why after all this, in the global hunger index, India ranks 111th out of the 125 countries? Thank you. Chairman, sir, while this is not directly related to the question, but I'm happy to share with the honorable member that the Global Hunger Index has not at all spoken about hunger being the cause of any death or there being any people who are hungry in India. In fact, I have in writing from all the states, including the state of Tamil Nadu, that there is no starvation death in their state thanks to the sufficient availability of food grains in the country. Our Annadatas really need to be complimented, and you are a Kisan Putra yourself for the fantastic increase in production in the last 9-10 years. We are one of the few countries in the world where production has gone up significantly. And thanks to the 81.35 crore poor and lower middle class people who get free food grains. The hunger index takes into account certain factors which have been wholly rejected by the government of India. They have certain ways of calculating stunting and malnutrition which have been rejected by the government of India, rejected by India because those pertain to Western standards and not to India. Well, all I can say with confidence, and I'm sure the House will agree, our hunger index for power is perhaps highest in the world. Am I right? Yes, it is there. It seems I am not intelligible. Yes. Dr. Fozia Khan, last supplementary on this question. Sir, the minister just mentioned about stunting and other things. So I would like to ask him, 200 million malnourished people are there in India, which involve factors like poverty, lack of proper nutrients in their food, access to clean water, poor sanitation, etc., sir. Despite the evident link between food insecurity and malnutrition, it has rarely been investigated. I would like to ask the minister, how do schemes like PMGKY address malnourishment in this context? Because he just said that dal we don't distribute. So why can't we include such nutrients? Honorable Minister. Today, PMGKY is possibly the world's largest outlay that has ever been embarked anywhere in the world on free food grains to ensure that no child sleeps hungry and all the poor get free food grains. 81 crore people are benefiting from that, fully funded by the government of India. Whether you want to give dal or other products, the different states are free to decide on their own and have their own schemes. Government of India has had an outlay of 11.8 lakh crores on PMGKY. As regards poverty, 13 crore people have come out of poverty in the 5-year period. The report has just come out recently. I think I would urge the honorable member to introspect what their party, what their government for so many years did that has caused this situation in the country today. Why are we in a situation where we have people who are still malnourished or are not getting adequate nourishment or protein? Is something that a government of which she and her party leaders were a part for over 55 years have to introspect that what did they do for all these years
that the country has come to this state of affairs and how in a short period of 9 years, the country has transformed itself so that across the country, nowhere there is shortage of food grain, nowhere are people dying of hunger. In any case, the malnutrition statistics are based on parameters which have been rejected by the government because they do not apply to the people of India, to the demographic profile of the people of India. Question number 64. Shri Harbhajan Singh. Honorable members, on every question, I get number of supplementary requests. But I, as per practice, can handle only 3. Therefore, and I take them as far as possible serially. But if they all happen from a same political party, I slightly deviate to make it little more representative. Thank you. Shri Harbhajan Singh. Honorable Minister. सभा पटल पर रख दिया गया. Dr. Ami Yaznik, first. Sir, I want to ask a question to the minister that given the situation and the state of electrification in rural areas, which is still a challenge, far off rural areas, what steps are being taken by the ministry to see that the farmers at that far end get an uninterrupted power supply so that they can come out with their products and their produce? So where is the question of, where is the data where they can say that there is rural electrification to the farmers? Because the question involves electric tractors. So I had to first ask this question in order to know that electric tractors will come later. What is your question? Yes, so where is the uninterrupted power that is required by the farmers? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने विद्युत की और किसान से बात की है, किसान से संबंधित विद्युत वैसे कृषि राज्य का विषय होता है, लेकिन भारत सरकार की ओर से किसानों को नई से नई टेक्नोलॉजी मिले, चाहे वो सोलर ऊर्जा के माध्यम से हो या बैटरी के सिस्टम से हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. जैसा कि मैं स्पेसिफिक एक्सक्यूशन के अंदर भी कहा गया ट्रैक्टर के विषय पर कि बैटरी से ट्रैक्टर चले या उसको कब परमिशन का विषय है, तो मुझे इसमें ये जरूर कहना है कि हमारी सरकार का ये विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि किसानों को नई से नई तकनीकी भी मिले और इलेक्ट्रिक से भी उनको कम उपयोग के साथ हम उसको किसान को सुविधा दे सके. मुझे इसमें आपसे ये बताना है कि जैसा कि किसानों को जिस तरह से आज एक ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की हमारी, जिसमें हमारी बहनों को भी उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी गांव के अंदर कैसे पहुंचे और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज 15,000 हमारी बहनों को ड्रोन के साथ ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन करके वो अपने गांव के अंदर वहां पर करेगी और ड्रोन के अंदर उनको सब्सिडी का भी 80% सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है और लगभग हम इसमें 1261-60 करोड़ रुपए का भी इसमें प्रावधान किया गया है. तो कुल मिलाकर यह कि नई टेक्नोलॉजी भी मिले और गांव के अंदर हम उस सारी समस्याओं का समाधान कैसे करें, इसके ऊपर लगातार सरकार की ओर से किसानों को तकनीकी उपलब्ध करवाए, इसके ऊपर सरकार का प्रयास है. और रही बात इलेक्ट्रिक की, तो उसके लिए भी आपको पता होगा कि आज गांवों के अंदर पहले की क्या स्थिति थी, अभी क्या है. देखो आज दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हर गांव तक लाइट पहुंचाने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारी सरकार ने किया, गाँवों के अंदर लाइटें पहुंची. वरना पहले ये स्थिति थी कि गाँवों के अंदर लाइट भी नहीं होती थी, बहुत कम गांवों के अंदर लाइटें उपलब्ध होती थी. तो मैं ये कह सकता हूं कि गांवों के अंदर ऊर्जा का भी संचार गांव तक पहुंचे और नई तकनीकी भी पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है. डॉक्टर फौजिया खान. Thank you, sir. Sir, considering the challenges in electrifying farm vehicles in India, particularly the issues with charging infrastructure, with durability, with reliability, along with the diverse range of heavy-duty machinery used in agriculture, especially for family farms in developing regions, and given the major farm vehicle manufacturers cater to global markets, making international developments impactful on product offerings, sir, has the ministry developed a strategy to promote the
holistic development of electrification initiatives for tractors in the country, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति जी, हम पहले कभी दूसरे देशों के अंदर जाते थे तो वहां पर किसानों को अत्याधुनिक यंत्र देखने को मिलते थे, जैसा कि चाहे ड्रोन हो, चाहे दूसरे एपिशेडर है, रोटावेटर है, ये दूसरे देशों के अंदर जाते तब देखने को मिलते थे। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद में ऐसे कई प्रयास किए जिसके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि जब 2014 से पहले 10 साल के अंदर जो लगभग उस समय इसके ऊपर जो एक खर्चा हुआ था वो 163 करोड़ रुपए खर्च हुआ था 10 साल में। लेकिन अभी हमने जो खर्च किया इसके ऊपर वो है 6,415 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए हैं। और मैं इसमें यह भी बताऊं कि पहले जो इक्विपमेंट जो मशीनरीज थी, 10 साल का फिगर बता रहा हूं, 10 साल के अंदर 10 लाख मशीनों का वितरण सरकार के द्वारा हुआ था। लेकिन हमने जो इन 10 सालों के अंदर 9 साल के अंदर जो वितरण किया है वो लगभग 35 लाख मशीनों का वितरण किया गया, जो 4 गुना अधिक है वहां उससे। और इसके साथ ही हमने आयरिंग सेंटर 23,472 कस्टम आयरिंग सेंटर खोले हैं। इसी तरह से गांवों के अंदर हाईटेक हब स्थापित करने के लिए 405 हाईटेक हब स्थापित किए हैं। ऐसे फार्म मशीनरी बैंक भी 20,000 से अधिक हमने वहां पर गांवों के अंदर पहुंचाई है। और इसके लिए जैसा कि प्रदर्शन है, गांवों के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करके नए ट्रैक्टर है या नई दूसरी इक्विपमेंट है वो किसान के गांव तक पहुंचे, उनको अत्याधुनिक कैसे पहुंचे, इसके ऊपर लगातार प्रयास करके 70,000 से अधिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किए। तो ये मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से सरकार की ओर से नई तकनीकी गांवों के अंदर पहुंचे, नए नए इक्विपमेंट उपकरण किसानों तक पहुंचे, इसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया है। और उसी का ये पार्ट है जो पहली बार देश के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को परमिशन भारत सरकार ने दी है। पहले देश के अंदर परमिशन ही नहीं थी, किसान ड्रोन से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का छिड़काव कर ही नहीं सकता था, इसकी अनुमति नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि देश के अंदर ड्रोन की स्वीकृति हमारे देश के अंदर किसानों को दी, और आज वो ड्रोन का उपयोग किसान, देश के किसान है वो करेगा। जब कभी विदेश में जाता था तब ये देखने को मिलता था, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा। श्री गुलाम अली। थैंक यू चेयरमैन सर। जम्मू कश्मीर भी इस हाउस से बहुत कुछ चाहता है। शुक्रिया, आपने हमें क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए टाइम दिया। सभी जम्मू कश्मीर में पहले अमन नहीं था, अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में वहां अमन आया है। और अब अवाम के जो मसले हैं कैलेंडर के बजाय खेत के हैं। इस तरह के जम्मू और कश्मीर का जो रोड है वो अक्सर बंद रहता है, पर कश्मीर का जो सेब उगाने वाला है, जहाँ जो बाकी अनाज के, वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ करा है, जीआई टैक्स दिए हैं, राजमा को दिया है, बासमती को दिया है, कश्मीर के केसर के उसको, और बहुत सारी पंप्स लगाए हैं। बहुत आपका प्रश्न, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फ्रूट जो है उनकी स्टोरेज के लिए, जहाँ कश्मीर में अनाज स्टोरेज के लिए कोई सरकार का ऐसा प्लान है कि स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए नौजवानों को वो बड़े बड़े गोदाम बनाए स्टोरेज के लिए, डीप फ्रीजर बड़े बड़े, ऐसा कोई प्लान है जहाँ कुछ बनाए हैं? थैंक यू। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, किसानों के जो भी समस्या है, चाहे उसके स्टोरेज की समस्या है या उनके अन्य प्रकार की समस्या है, तो उनके लिए भारत सरकार ने स्टोरेज के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया है। MIDH स्कीम के अंदर भी इसका प्रावधान है, जिसमें वो अगर गांव के अंदर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहता है या जहां भी वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि उसमें 2 करोड़ रुपए तक का अगर कोई किसान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस या सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट भी अगर गांव में लगाना चाहता है तो उसमें 2 करोड़ का प्रावधान है। और उसमें 3% ब्याज की छूट का भी प्रावधान किया गया है।
ताकि, और उसमें बिना कोई कोलेटरल के उसको पैसा किसान को मिलता है, जिसमें कोई प्रकार का उसको डॉक्यूमेंट्स गिरवी नहीं रखना पड़ता। और इसके साथ ही उसके अंदर सब्सिडी का भी प्रावधान है। वो MIDS की स्कीम जो है जिसमें 40% की सब्सिडी है या 35% की जो सब्सिडी है, और उसके अंदर भी अगर उससे लेना चाहता है तो दोनों को क्लब भी किया गया है, उस स्कीम से सब्सिडी ले सकता है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से वो उससे ऋण भी ले सकता है। तो ये दोनों को क्लब करके बनाएगा, जिसका पूरे देश के अंदर भी लाभ हो रहा है। और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे कई प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, जिसमें आपके केसर सैफरॉन का भी बड़ा एक पार्क वहां पर लगा है, और सेब के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का आपने जिक्र किया, तो हमने किसान रेल के माध्यम से भी इस पूरे देश के अंदर किसान रेलें भी चलाई ताकि हम उसको अधिक से अधिक लाभ दे सके। तो इसके लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, श्री प्रभाकर रेड्डी, वेमी रेड्डी। ऑनरेबल मिनिस्टर। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। अनिल प्रसाद हेगड़े। आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या यह बात सच है कि भारत का सीड मार्केट में जो बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वह पिंक बोलवर्म के लिए रेसिस्टेंट है, और मॉन्सेंटो बेयर जैसे बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बीज कंपनियां पिंक बोलवर्म इन्फेस्टेशन के कारण किसानों को हुई नुकसान का भरपाई करने किसानों को कितना पैसा देकर कंपेंसेट किया, और कौन कौन सा प्रदेश सरकारों ने किसानों को इस बात के लिए कंपेंसेट किया? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, पिंक बॉलवर्म की जो बात माननीय सदस्य ने की है, इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये प्रयास किया है कि उसके अंदर नई वेराइटियां भी हमने तैयार की है। ICR लगातार इसमें प्रयास करके कई वेराइटियां भी तैयार की है। और उसके बाद में जो इन्होंने सवाल का जो प्रश्न पूछा है कि उसकी भविष्य में किस तरह से इसका समाधान भी हो, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि ये पिंक बॉलवर्म में जिसकी वजह ये है कि लास्ट के अंदर जब बरसात हो, जुलाई के अंदर जब बरसात भी आती है उसी समय ये आता है। इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो उसके अंदर रहती है लगभग 4 महीने, और ये 3-3.5 महीने रहती है और 4 महीने होती है। तो इसलिए इसकी समस्या ये सामने आती है, वो लास्ट में आती है। लेकिन इसके लिए हमने वेराइटियां हैं वो बिल्कुल ICR की तरफ से लगातार प्रयास करके की जा रही है, तैयार। श्री वी विजय साई रेड्डी। Sir, thank you very much, Chairman. Sir, this PB0 technology which is being tested in Kurnool, district of Andhra Pradesh, and which is tested to effectively kill pink bollworm, whether the government of India have got the plans to plan of action to provide, and if at all there are plans to implement to distribute it, then the minister may, honorable minister may provide the details. Honorable Minister. सभापति जी, इसके अंदर मैंने जैसा पहले कहा कि कुछ तो हमने वैरायटियां तैयार की है, और उसके साथ ही किसानों को एडवाइजरी भी हम जारी करते हैं, और इसी का परिणाम है कि एडवाइजरी जारी करके और उनको बताया भी जाता है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो 2017-18 के अंदर जो थे लगभग 30% ये पिंक बॉलवर्म की बीमारी की वजह से फसल का नुकसान होता था, जो अब लगभग घटकर सिर्फ 10% रह गया है। यानी कि 30% हमने कटौती इसकी माध्यम से की है कि हमारे जो किसान साइंटिस्ट है वो वहां पर जाकर डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, और जो एडवाइजरी किसान जो हमारे साइंटिस्ट जारी करते हैं उसके अनुसार अगर किसान उसका सीड का जो फर्टिलाइजर का छिड़काव समय पर अगर करते हैं तो उसमें किसान का बचाव जरूर होता है। और ये सारी जानकारियां देने की वजह से 20% की कमी आई है। आगे हमारा लगातार ये प्रयास है कि इसमें भी कटौती आए, लेकिन क्या है कि ये कोई भी अगर पौधा है तो उसमें बीमारी तो स्वतः कहीं न कहीं से आती है, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि उसकी कैसे उसका समाधान हो। तो इसके लिए निश्चित रूप से वेराइटियां भी है, और जो इसका पेस्टिसाइड की है वो भी नई नई तरीके से लाके उनको समाधान करें, इसके ऊपर सरकार के लगातार कार्य चालू है। क्वेश्चन नंबर 66, श्री शक्ति सिंह गोहिल, नॉट प्रेजेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर।
श्री विप्लव कुमार देव। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। जो रेलवे ओवरब्रिज का जो प्रस्ताव त्रिपुरा सरकार की तरफ से दिया गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो किस लिए नहीं हुई? ऐसे में ये प्रश्न उसके थोड़ा सा दूर है। मैं मंत्री जी से थोड़ा आश्वासन चाहता हूँ। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, रेलवे के जो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस हैं, उसमें जिस तरह से पिछले 9.5 वर्षों में काम हुआ है, वो काम एक हिस्टोरिक काम है। अगर हम 2004 से 2014 का पीरियड देखें तो 2004 से 2014 के बीच में कुल मिला के 4148 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने थे। और 2014 से 2023 का जो पीरियड है, इसमें देखें तो 4000 पुराना जो था, उसके कंपैरिजन में माननीय सभापति महोदय 10,867 यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस को बनाने के लिए कई तरह के रिफॉर्म्स भी किए गए, एक्स्ट्रा फंड सैंक्शन किए गए, करीब 80 के आसपास स्टैंडर्ड अलाइनमेंट्स बनाए गए, जिससे कि 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, 4 लाइन हो, 90 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, हर तरह के अलाइनमेंट के लिए स्टैंडर्ड डिजाइन्स और स्टैंडर्ड ड्राइंग्स बनी है, जिसके कारण आज प्रैक्टिकली बहुत ही कम टाइम में सारे अप्रूवल्स हो जाते हैं। और इसके अलावा जहां पर भी लेवल क्रॉसिंग गेट है और लेवल क्रॉसिंग गेट के बाहर भी जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेते हुए भी रेलवे का जो प्रशासन है वो उसमें फैसले करते हैं। माननीय सांसद महोदय ने जो त्रिपुरा के विषय में प्रश्न रखा, मैं माननीय सांसद महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा, इनवाइट करूंगा कि आके बैठे और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करें। He has missed the bus. Dr. John Britas. Sir, though my question is not directly linked to the original question, since the Honorable Minister is very ebullient and erudite, and also since he spoke about the facilities being extended to the passengers, I would ask a specific question with your indulgence, sir, that since he is vocal about the facilities to the passengers, there are constraints and difficulties that are heaped on the passengers because of discontinuation of the concessions for the senior citizens. And since there is a premium tatkal which has been brought in to fleece the passengers, since conversion of the sleeper and general compartments to AC, so will he review his stand? And also through your good officer, I will extend all my best wishes for his future endeavors. Honorable Chairman, sir. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir. First of all, the honorable, very, very erudite member and very erudite member and very and senior most member. There may be a caveat from the chair. Yes, sir. So, not on your intellect, on his direction only. Go ahead. So, honorable member could not ask a question. He has made some comments which are very misleading comments, and I fully respect all the points that he has made. If he has any specific questions which is related to the particular question right now being discussed, definitely he is most welcome to come and discuss any particular ROB or RUB, flyover or underpass in Kerala or his area, so that we can discuss and find a solution to it. Before that, he has missed the bus but not plane. Okay, 1 second. Sir, now this is the second instance. No, but he will not have enough time. Second instance in one day. 30 seconds. That a member shoots and scoots. This is the second instance. First I had the case of Dal. Now we have the case. So this, what will be the
I want a ruling what will happen to a member who makes false allegations or just sensationalizes an issue to try and draw attention to which is something which is not factual. If found so, what action will be taken against such a member? Well, Honorable Minister. Sir, Honorable Chairman, Honorable sir, Minister. this is a matter of great importance. This is matter of great importance. If any honorable member, in the garb of asking a question, is plainly making allegations which are baseless, absolutely false, have absolutely no direction, then what should be the treatment? What should be punishment to that particular honorable member? Let me tell you, Honorable Chairman. and let me take the House in confidence. 1 second. No. I look into all aspects. Honorable members. Yes. 1 second. Mr. Shakti Singh Goyal. सर मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल आपके जरिए यही है कि ये ब्रिज काफी लंबे अरसे से बन रहा है, उसकी टाइम लिमिट क्या थी और अभी तक खत्म नहीं किया है आरएनबी डिपार्टमेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर। मैं सर, इस ब्रिज के अप्रोच रोड पे काम चल रहा है अभी, गर्डर इसका फैब्रिकेशन हो रहा है, इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। इसमें कुछ शुरू में दिक्कतें आई थी। शक्ति सिंह जी जानना चाहते हैं कि आप शक्ति का उपयोग कर गति शक्ति का उपयोग कर ये कब तक पूरा कर देंगे, ये जानना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी कर देंगे, जल्दी से जल्दी कर। ये 3-4 साल से ब्रिज का काम चल रहा है। The House will meet at 2 p.m. today. A bill passed by both houses of parliament and assented to by the president. Adjournment of the sitting of the house. Termination of the sitting of the house, which meets again at the same time appointed for the next sitting. Adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expulsion. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha.
भारत में स्टार्टअप की दुनिया ही बदल चुकी है। The special session of Parliament commenced with a very important message from Chairman of Rajya Sabha. Honorable members, use of wit, humor, sarcasm, and even acerbic comments inside Parliament are important, inalienable facet of a vigorous democracy. These days, we don't get to hear such light-hearted exchanges. Hopefully, we'll see the revival of wit, humor, and scholarly debates. Lighter moments were witnessed during the special session as Chairman sought to use laughter as the best medicine in the House. If you want to address the chair, you can gentlemanly rise and make your point. Not in a cozy chair like this. One second. No. Honorable, one second. Leader of the opposition. Honorable leader of the opposition. और उसके पहले मैं खड़गे जी आपसे एक बात कहूंगा कि जो मैंने विट ह्यूमर की बात की है उसमें आप पर लागू नहीं है। आपने विट भी दिखाया है, ह्यूमर भी दिखाया है, सरकाज़म भी दिखाया है। वो बात मैंने बातों के लिए कही। मैं ये सोच के आया था क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुंचा। मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और किसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे, ये उम्मीद से मैं आया था। यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है। It is 261st session, special session. Then came the much-awaited historic move of shifting the entire parliamentary system from Samvidhan Sadan to the Parliament House of India.
माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। Parliament House of India. This iconic building is a cradle of empowerment, igniting dreams and nurturing them into reality. The treasured and iconic legislative debates in this temple of democracy are replete with wit and humor. Humor is an enlivening force capable of transforming a tense and turbulent atmosphere into an amiable one. It brightens life and instills in it the spirit of harmony and goodwill. Humor is indispensable, intangible, and forms the very texture of our lives. Hello and welcome, viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV, Humor in the House. I have packed all the fascinating and captivating moments for you of wit and humor of Parliament House of India. So come along. I'm here. I am always looking at you. Yes. But my difficulty is that. And when you look at, whenever you look at me, I smile at you. No, whenever you look at me, I smile at you. Good. Yeah. मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेगा. Yes, thank you. Jairam, now you have made a reflection. Let him react. Here. And before that, Jairam was on right track. Jairam, you were on right track. But when I took the seat, you got into political. From science, you traveled to politics. Sir, I had got up in between also. Unfortunately, Jairam thought, Honorable Chairman, sir. सर हमारा पुराना रिश्ता है सर, हमारा पुराना रिश्ता। और ये बड़े इन्होंने कुछ साल पहले आइंस्टाइन और न्यूटन को कंफ्यूज भी कर दिया था। पुराना उसको याद रिश्ता नहीं दिलाऊंगा, पुराना रिश्ता पर आज उनसे भाषण सुनना पड़ा, प्रवचन सुनना पड़ा। पुराना हमारे रिश्ता, स्पेस प्रोग्राम का क्या उपलब्धियां हैं। पुराना रिश्ता और पुराना घाव सोचा मीठा दर्द देता है। But at the end of the day, I'm sure my honorable colleague and friend Jairam will also appreciate that people run many races. There are marathons run, there are sprints run, there are 100 meters, 200 meters, 42 kilometers, all sorts of races. But ultimately, one must also acknowledge that it's the Your turn will grit come. and determination that makes the winner win. But on the other point where he made a personal comment of me, well, I'm sure everybody is human and everybody can make mistakes. Honorable members. I may not be as infallible as Mr. Jairam Ramesh. He's of course infallible. Please. He has never made any mistakes in life. I have very openly and in public acknowledged I made a mistake at that point of time in the rush of speaking. But I have not made the kind of colossal mistakes that my friend Jairam Ramesh has done. So in the age of figures, statistics and evidence, I can't say I am saying so, that's or anybody else says so. And it's also gone are the days when I would say I'm more experienced and wiser than you, or I'm more grey haired. Today... Sir, I don't see grey hair. Sorry, sir. I see grey material, but grey hair is not visible. Sir, all kinds of colors are available in the market today. Sir, with you, person like you, inspiring chairman, I think it motivates everybody to use the kind of color he or she wants. For grey hair, you can look to Jairam Ramesh.
complete grey hair. I can share some with him, sir. Please. But he has more grey matter than me, sir. I think that is the sense of the house. No, I think there is a sense of acceptance. I'm glad. About 3 decades ago, I was in Rajya Sabha as a junior minister. A very distinguished member was making a scholarly address at Jaramia. At that point of time, there was entry of another member. It is in the context of Leader of the House saying, I fully agree with him. I'm on that. So when that member entered, the speaker got worried that that member will unsettle him. So he immediately says, even my very good learned friend agrees with me, so that he doesn't say otherwise. And came the swift comment, fools never do. That was a comment. No, I said you have to understand, sir. I said it with apologetic mode. That if these two have agreed, we have to see in several perspectives. ये आखिर में बोलने के नुकसान बहुत है. बोलने को कुछ बचा ही नहीं. मैम, इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं. आप तो समय मत गिनवाइए, ये तो गिनवाते ही हैं. सर, I hope this is not cosmetic. This parampara will be carried on and remain. नहीं तो आपको ये हाउस की महिला है सब प्लास्टिक सर्जन के. I know their firepower. I know your firepower. सर, आपकी कुर्सी बहुत मजेदार. वहां बैठो तो वो झूले की तरह आगे पीछे होता रहता है. So now I know why you keep coming back and sitting here for so long. This is ये 7-star होटल में अगर कोई अच्छी चीज है तो ये व्हील अप चेयर जो है बहुत बढ़िया. आप मानते हैं ना सर? आप मानते हैं? मैं तो बीच में हूँ. तब तो दोनों आपको परेशान करेंगे. We saw hilarious exchanges as Parliament hailed the success of Chandrayaan-3. Professor, on a point of fact, Honorable Prime Minister is the Cabinet Minister for this department. That I know. I am his student. A student can always put across a situation. ये आपने बहुत ठीक कहा. When our first Prime Minister, a giant of a person, तब कहा गया था, nothing grows under the banyan tree. It is heartening to note कि यहाँ बनियान ट्री के नीचे आप इन लोगों से क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर जितेंद्र भी है. Please go ahead. उसके नीचे एक ही नहीं परफेक्ट. हमारा जीरो करो काम जीरो. ये गरीब वाले जीरो करो. तो ये मुश्किल हो जाएगा. प्रोफेसर साहब, अब आप राजनीति में जा रहे हो. अब आप हमें बीच में डिस्टर्ब मत करो. और मैं आज बोलूंगा 5-6 मिनट. बीच में घंटी मत बजाइए. ओके. तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया. आज ये सही चल रहा है. मुझे राज्यसभा में आने के लिए ही कर रहा था. तो इनकी टिकट क्यों दी आपने? टिकट क्यों दी आपने? बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था, मजबूरी में लाना पड़ा. मैं जानता हूँ बहुत फ्रॉड था. तो करवा चौथ पे महिलाएं चंद्रमा को और खूबसूरती का वो माना जाता था. लड़की का नाम है शशि. उसने कहा साहब चेहरा इसका बहुत खराब है, चंद्रमा. हमारा नाम तो शशि चंद्रमा. कोई शशि प्रभा है, कोई चंद्र प्रभा है. इस सब और तमाम आदमियों के नामों के पीछे चंद्र लगा हुआ. सुभाष चंद्र, मानिक चंद्र, तिलक चंद्र, फला चंद्र, चंद्रमा से तो लगा हुआ. अब ये है कि जाने अनंत काल से हम लोग चंद्रमा को बहुत खूबसूरत मानते रहे,
इसलिए हम तो अपने वैज्ञानिकों को कहेंगे कि उनकी बदसूरत फोटो मत भेजिए, रिसर्च करते रहिए। कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम, कांग्रेस के बड़े नेता है रमेश जयराम, लेकिन सभी का आपने नाम लिया, लेकिन आपने नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी का नाम। आज के बहुत ही सुंदर है शाम, आज के बहुत ही सुंदर है शाम, अब तो नरेंद्र मोदी जी को याद करो रमेश जयराम। As New India embraced new Parliament House, humour and wit became more instrumental in decision and lawmaking, a reflection of which we saw during the passage of Nari Shakti Vandan Adhiniyam. माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूँ, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। डरिए मत, डरिए मत, अरे भाई डरो मत। अब रिसर्च ये बताती है कि women are more accessible than men as a public representative. अब ये रिसर्च बताती है कि कलेक्टिवली नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई। अब ये बताती है कि the corruption level is less where there are women representatives। यह भी बात समझ लो। मैं इसलिए मैं पुरुषों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा ना लीजिए। चारों तरफ देखते हैं तो जब नई नई पंचायत व्यवस्था आई थी और गांव में जाता था तो पूछता था कि आप कौन है? मीटिंग में आते थे, कहते थे मैं सरपंच पति, मैं प्रधान पति, मैं जिला प्रमुख पति। ये कल्चर चालू हुआ था, वो कल्चर अब खत्म हो गया है। And that you can see all around. कांटों से कीलित पथ पर Poems and shloks were also used to convey a subtle message. Let's enjoy these oratorical flourishes. तुम सृष्टि की आधारशिला, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला। संगीत तुम्हारा कण कण में, तुमने जीवन में रंग भरा। तुम माँ भी हो और बेटी भी, तुम बहन और अर्धांगनी, तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी, तुमसे ही जीवन पूर्ण हुआ। अहंकारम बलम दर्पम गावम क्रोधम समस्तिका मम आत्मा सर्वदेहेषु तदो विष्णु उपस्वाका। मतलब क्या है? आत्मा हर्षित मंत्रेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचली विशरत्वा सर्वावांछन्तु मातत्व राष्ट्रमधि भ्रशत। अर्थात हे राष्ट्रीय अधिपति, मैं आपको चुनकर लाया हूँ। आप सभा के अंदर स्थिरता बनाए रखें, सारी प्रजा आपको चाहेगी और आपके द्वारा राज्य का पतन भी नहीं। वो परख रहे हैं तूफानों में कितनी ताकत है, वो देख रहे हैं आंधियों की कितनी आहट है, पर मन में संकल्पों की राहत है। कांटों से कीलित पथ पर कदमों की छाप उकेरी है, हाथों को वज्र बनाकर अंधियारों में दीप जलाती वह एक जान अकेली है, वह एक जान अकेली है। ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভে। ভারত will once again reclaim her seat in the world stage. ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে। हे लोग युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग की, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य, तो फिर एक बार सारे भारत में गूंजे उठे हर हर बम बम का फिर महोत्सव। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना,
মুঝসে বুরা না কো। ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো। কিরিট ধারিণী তৃষার সিংহ সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি তোমার রূপের নাহি তো শেষ। সগন গহন তমসা সহসা নেমে আসি যদি আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর। শক্তি দাইনি দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ, আধারে জননী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের নেই। अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब्द में कमी नहीं आई, अभी गिरानिए शब्द में कमी नहीं आई, निजात की दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। होना ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम सदा पलता रहेगा। Well, viewers, I'll leave you with that healthy dose of laughter. With camera person D.K. Pandey and camera assistant Hari, I'm Kriti Mishra signing off for Sunset Television. भारतीय संविधान में कर्तव्यों को शामिल करने का मूल विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। वर्ष 1976 में ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किए गए। इन्हें संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर के रूप में ये बताना है कि संविधान ने विशेष रूप से उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। ये आपको बताते हैं मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल 7वां कर्तव्य क्या है। 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं। उनकी रक्षा और संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। असम के जोरहाट जिले के रहने वाले जादव पायेंग ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अकेले अपने दम पर 1360 एकड़ का जंगल खड़ा कर दिया। वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके फॉरेस्ट मैन जादव पायेंग इस कर्तव्य के निर्वहन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद इस कर्तव्य को पूरा किया है, बल्कि लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रकृति के प्रति ये उत्तरदायित्व, ये कर्तव्य भारतीय सदियों से निभाते आ रहे हैं। राजस्थान के सूखे से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन के लिए बने तालाब और बावड़ियां इन्हीं का उदाहरण है। बनवारी वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई से बने ये सैकड़ों तालाब लाखों लोगों की प्यास इसी प्रकार बुझाते थे। प्रधानमंत्री लगातार पर्यावरण के प्रति अपने इस कर्तव्य की चर्चा करते रहते हैं। अपने मानसिक कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से भी वे पर्यावरण को बचाने का संदेश प्रेषित करते रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ने हमें प्रकृति के साथ संघर्ष करना नहीं सिखाया है। हमें प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है। महात्मा गांधी ने तो जीवन भर हर कदम इस बात की वकालत की थी। जब आज भारत क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, जब भारत ने COP21 और पेरिस समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई, जब हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पूरी दुनिया को एकजुट किया, तो इन सब के मूल में
महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करने का एक भाव था। हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लेनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों की तरह ही मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जितने आवश्यक मौलिक अधिकार होते हैं, उतने ही अहम होते हैं मौलिक कर्तव्य। देश के नागरिकों से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वे अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। +1,000 gigawatts renewable energy potential in India. As of July 2023, renewable energy sources in India have a combined installed capacity of 179.32 gigawatts. India is the world's third largest producer of renewable energy, fourth in wind power capacity, and fourth in solar power capacity. India aims to produce 5 million tons of green hydrogen by 2030. India has already achieved its target of 40% installed electric capacity from non-fossil fuels. UN Secretary General Antonio Guterres has warned the world that humanity is on the highway to climate hell with foot on accelerator. Listen in. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. We are in the fight of our lives and we are losing. India is emerging as a global powerhouse in the renewable energy sector and is set to achieve net zero emissions by 2070. India's announcement that it aims to reach net zero emissions by 2070 is a hugely significant moment for the global fight against climate change. We believe that an ounce of practice is worth more than a ton of preaching. हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। Hello and a very warm welcome, viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV on making India a manufacturing powerhouse. And today, our focus is on the renewable energy sector. In this edition, we've packed everything for you on how India is emerging as a global powerhouse in the renewable energy sector, voices that matter, stakeholder versions, and of course, a visit to the manufacturing unit. In fact, right now, we're at one of the MSME units producing solar components. So come along with me on this exciting journey. With a population of around 1.4 billion, India has a massive demand for energy to fuel its rapidly growing economy. From a power deficit nation at the time of independence, the efforts to make India energy independent have continued for over 7 decades. Today, we are a power surplus nation with a total installed electricity capacity of over 4 lakh megawatts. The International Energy Agency has called it the largest ever expansion of access in the history of mankind. Largest ever expansion of electricity access anywhere in the world in history. No country has connected so many households in such a short period of time. India has made impressive strides in the renewable energy sector, positioning itself as a front-runner in the global renewable energy market. Thanks to central government policies and initiatives, technological advancements,
and significant foreign investments, India has witnessed remarkable growth in the renewable energy capacity. The scale of transformation in India is stunning. Its economic growth has been among the highest in the world, lifting millions of people out of poverty. Every year, India adds a city the size of London to its urban population, involving vast construction of new buildings, factories, and transportation networks. Coal and oil have so far served as bedrocks of India's industrial growth and modernization, giving a rising number of Indian people access to modern energy services. This includes adding new electricity connections for over 50 million citizens each year over the past decade. Despite the fact that nation consists of over 17% of world population, it only accounts for about 5% of global emissions. India's sheer size and its huge scope for growth means that its energy demand is set to grow by more than that of any other country in the coming decades. In a pathway to net zero emissions by 2070, India estimates that most of the growth in energy demand in this decade would already have to be met with low carbon energy sources. Having understood the importance of this crucial sector in the years following the signing of the Paris Agreement, the renewable energy sector was one of the critical sectors identified under the Make in India program, which was launched in 2014. With its focus on a zero defect and zero effect policy, there was a need for the development of the sustained long-term capacity of the renewable sector while ensuring zero effect through reducing greenhouse gas emissions by increasing dependence on clean and green technologies. Private sector is driving the renewable energy wave in India. The phenomenal growth of manufacturing industry in our country is a testimony of the fact that Make in India is just not a patriotic slogan. It has been fully imbibed by the consumers and supported by the industry. The growth in manufacturing sector is not only limited to one or two places, but it is all across. For example, in the renewable industry, till around a decade back, as well as module manufacturing is concerned, we have a capacity of even less than 10 gigawatt. And by 2026, we're looking forward to add at least 100 gigawatt of module manufacturing capacity. We want to lead by example and leave behind a cleaner, sustainable planet for our future generations. That is the mission that we at Renew Power are embarked upon. India has been aggressively pushing towards a more sustainable future by investing heavily in renewable energy sources, with solar energy at the forefront of its efforts. India is endowed with abundant solar energy, which is capable of producing 5 trillion kilowatts of clean energy. We are blessed with around 300 sunny days in a year. Many states in India have already recognized and identified solar energy potential, and others are lined up to meet their growing energy demands with clean and everlasting solar energy. The top 5 states for installed renewable capacity in India are Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, and Maharashtra. Most states in India have a comprehensive residential solar rooftop policy, and you can use the power produced from your own residential rooftop solar system. 8,877 megawatts rooftop solar capacity was added as on 31st of March 2023. The Ministry of New and Renewable Energy, under its scheme Development of Solar Cities, has approved and sanctioned 60 cities. Sachi, the historic home to the renowned Stoop, now holds the distinction of being India's first solar city. India's utility-scale solar park model has firmly stood its ground. India now houses multiple ultra-mega solar parks with capacity of more than 1 gigawatt, and 2 of them are the largest commissioned in the world to date. The solar parks in India continue to attract global capital and some of the most renowned domestic and international renewable energy developers. Bhadla Solar Park is the world's largest solar park
located in India, which is spread over a total area of 14,000 acres in Jodhpur district in Rajasthan. Floating solar power also helps tap into India's large water reservoirs and overcome some of the persisting issues facing ground-mounted solar. The largest floating solar power plant in India is currently Ramagunda in Telangana. The Union Cabinet has also approved to introduce the production-linked incentive scheme in high-efficiency solar PV modules for enhancing India's manufacturing capabilities and enhancing exports. The scheme focuses on direct employment of about 30,000 and indirect employment of about 1,20,000 persons. Import substitution of around 17,500 crore every year. The government has also allocated a total capacity of 39,600 megawatts of domestic solar PV module manufacturing to 11 companies, with a total outlay of 14,007 crore under the production-linked incentive scheme for high-efficiency solar PV modules. Manufacturing capacity totaling 7,400 megawatts is expected to become operational by October 2024, 16,800 megawatts capacity by April 2025, and the balance 15,400 megawatts capacity by April 2026. Thanks to the government's proactive schemes like production-linked incentive and other incentives, India has been emerging as a global hub for solar manufacturing. As for NSEFI's official data estimates and market intelligence, we believe that India's manufacturing capacity for solar modules will touch 100 gigawatt by 2026 or 2027, with another 100 gigawatt of cell manufacturing capacity and around 60 to 70 gigawatt of ingot polysilicon wafer capacity. The focus has been on made in India also. That is where the manufacturers like us are finding a good space to show to the world that yes, there is alternative to China, and yes, the made in India renewable energy products are available, and we are equally competent and we are equally price competitive, technology competitive to offer to the world good quality solar products. A treaty-based international intergovernmental organization, International Solar Alliance, aims at mobilizing more than $1,000 billion of investment by 2030 for the massive deployment of solar energy. It was established by Prime Minister Narendra Modi and then President of France on November 30, 2015. ISA's objective is to scale up solar energy, reduce the cost of solar power generation through aggregation of demand for solar finance, technologies, innovation, research, and capacity building. We've also put together a global solar facility which provides a payment guarantee mechanism to the private sector investors who invest in these kinds of small projects. With all of this, we hope to be able to create the kind of ecosystem that it takes for the world to move towards a solar future. Hydropower is commonly produced when fast-moving water spins turbines to generate electricity. India is endowed with large hydropower potential of 1,45,320 megawatts. There are around 197 hydroelectric power plants in India, with nearly 100 gigawatts of electricity potential in India's rivers lying untapped because of high tariffs. The government has approved a slew of measures under the hydro policy to make it competitive. As part of the new hydro policy, large hydropower projects have been declared as renewable energy sources, making them a part of renewable purchase obligation, which requires power discoms to buy a fixed amount of renewable energy to cut reliance on fossil fuels. These measures are particularly beneficial for development of hydro projects in hilly regions and states, which are often located in remote and far-flung areas and require development of extensive associated infrastructure such as roads, bridges, for transportation of heavy and large-sized equipment and machinery to the project site. Koyna Hydroelectric Power Project is considered to be the largest hydroelectric power plant in India.
Wind energy in India is emerging as an important and reliable source of renewable energy. Wind energy is generated by the use of wind turbines installed in wind farms. According to MNRE, the total installed capacity of wind energy in India is 41.2 gigawatts as of September 2022. There are more than 800 wind power plants in India installed to generate wind power. Tamil Nadu tops the list of states with the largest installed wind power generation capacity. Gujarat houses the second largest installed wind power generation capacity. Maharashtra has the third largest installed wind power generation capacity. Karnataka houses the fourth largest installed wind power generation capacity. Rajasthan houses the fifth largest installed wind power generation capacity in the country. For offshore wind energy, India has a very vibrant policy that came up in October 2015, known as the National Offshore Wind Energy Policy Framework. The objective is to develop offshore wind energy in Indian Exclusive Economic Zone along the Indian coastline. A solar wind hybrid policy was issued in May 2018. The main objective of the policy is to provide a framework for the promotion of large grid-connected wind, solar, photovoltaic hybrid systems for optimal and efficient utilization of wind and solar resources. The wind-solar PV hybrid systems will help in reducing the variability in renewable power generation and achieving better grid stability. The Green Hydrogen Mission aims to promote the production and utilization of green hydrogen. It is poised to play a pivotal role in reducing the nation's carbon footprint and achieving its commitment to renewable energy sources. The government has approved a whopping 19,744 crore for the implementation of the National Green Hydrogen Mission in the country. Considered a future fuel, green hydrogen or ammonia is said to be a replacement for traditional fossil fuels. The mission is to reduce India's oil imports and provide clean fuel to citizens. At the same time, to make India a global hub for using, producing and exporting green hydrogen. Its production capacity is likely to invite investment of 8 lakh crore and create over 6 lakh clean jobs. Hydrogen is light and can be stored. It is energy dense and doesn't generate direct polluting emissions. Therefore, it is considered as the substitute for fossil fuels in heavy transport sectors like maritime transport or the aviation sector, where it is hard to decarbonize the fuel. There was undivided focus on mitigating climate change and switching to renewable sources during India's ongoing G20 presidency. In fact, parliaments of the G20 nations and other invitee nations discussed the issue during the P20 summit hosted by India. After pioneering International Solar Alliance, India has also paved way for Global Biofuel Alliance. Biofuels are generated from all types of waste, which of course is locally available everywhere. While currently biofuel is only systematically produced from crops and industrial food processing waste, it can also be produced from human-generated waste due to advances in technology. This solves multiple problems. Waste is diverted from landfills as an energy source. It is renewable and available at all times, and being locally produced resolves the hazards and carbon emissions. Prime Minister Modi, along with the leaders of Singapore, Bangladesh, Italy, USA, Brazil, Argentina, Mauritius, and UAE, launched the Global Biofuel Alliance on 9th of September 2023 on the sidelines of the G20 summit in New Delhi. The Global Biofuel Alliance is an initiative by India as the G20 chair. The alliance intends to expedite global uptake of biofuels through facilitating technology advancements. In this leaders' communique, and that's a very important component. It talks about tripling renewable energy, cutting down on fossil subsidies, but it talks about green hydrogen, it talks about biofuel, this partnership on biofuels, Global Biofuel Alliance. It talks about ending plastic. It talks about disaster risk reduction. So many, many components to the Green Development Pact. And this, to my mind, is one of the biggest achievements which this G20 has seen.
1,600 retail outlets, E20 is available. And the movement forward is to have, by the end of 2025, all petrol pumps in the country to have E20. But I think an even more significant achievement of the leadership of the Honorable Prime Minister is that we've already moved from the hesitancy of 5%, hesitancy of 10%, hesitancy of 20%. Our mindset is already changing and looking beyond 20%. How will that happen? Greater ethanol production. India is pioneering a new model of economic development that could avoid the carbon-intensive approaches that many countries have pursued in the past and provide a blueprint for other developing economies. In addition, Government of India has also initiated major reforms with missions, like the Renewable Energy Evaluation Storage Projects. For example, Green Credit Program, PM Pranam, Govardhan Scheme, Bharatiya Prakritik Kheti, Bio Input Resources Center, Nishti, Amrit Dharohar Initiative, Coastal Shipping Replacement, Vehicle Scrappage Policy, PM Kusum Yojana, which are spread across 13 ministries as part of Green Growth Agenda. Sector is witnessing a rapid growth. There's been more than 50 gigawatt of bids already announced by utilities. And on top of that, both commercial and industrial category of consumers are also eager to buy more and more renewable power. It doesn't stop at this. Indian government is also pushing that all these power plants should use Make in India. In an era of accelerating change, the imperative to limit climate change and achieve sustainable growth is strengthening the momentum of global energy transformation. The rapid decline in renewable energy costs, improving energy efficiency, widespread electrification, increasingly smart technologies, continual technological breakthroughs, and well-informed policy making all are driving the shift, bringing a sustainable energy future within reach. Reverse actions today will be crucial to create a sustainable energy system. Ultimately, the path to secure a better future depends on pursuing a positive, inclusive, economically, socially, and environmentally beneficial energy transition, the way India is pursuing. Viewers, that's all I have for you in this edition. With camera person DK Pandey, camera assistant Riyasat, and video editor Mukhtar Ali, I'm Kriti Mishra, signing off for Sunset Television. Naming a member. The drawing of attention of the House by the chairman to the conduct of a member who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the House by persistently and willfully obstructing the business thereof, with a view to action being taken to suspend him from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session. Ordinance. A law made by the President in exercise of the powers vested in him under Article 123 of the Constitution. Question of privilege. A question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a committee thereof, or a contempt of the House. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar has reconstituted the panel of Vice-Chairpersons with 50% women parliamentarians.
Many parliamentarians have been nominated for the first time. I have to inform honorable members that the panel of vice-chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Fulo Devi Netam, Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri Sukhendu Sekhar Rai, and Shri Kartikesh Sharma. All the nominated members have expressed gratitude to Chairman Dhankar for the opportunity. इतना बड़ा मौका देने के लिए मैं माननीय सभापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और बहुत आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने एक महिला को ये सम्मान और अवसर प्रदान किया है और ये मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे इस काम को मैं अच्छी तरीके से करूंगी. This is my last year of the term, and I'm looking forward to understanding a little more on the other side, sitting on the other side. And I suppose to be seated in that grand seat, that chair, would definitely mean something in my entire career, not only of as a MP, in my life. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है. निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाने का पूरा कोशिश करूंगी. I'm very grateful to the chairman for giving me this opportunity. It's a big responsibility. I would like to thank the honorable chairman for giving me this opportunity, and I think it's fantastic that youngsters like myself who have been in the parliament for a little more than a year have got opportunities to understand the system and also be a part of the system. It's a very big responsibility, and I intend on taking it very seriously as well. So my basic priority will be that the house should function in a manner that it's supposed to. And it took me almost a year to make my maiden speech. I hope that doesn't happen to the others because of the disruptions by the opposition party. I think the main mandate of all members of parliament when they're elected by people is that they put out their opinion and voice their opinion of people who they represent. And it's extremely important to give them a chance to speak. I think that will be my main priority, that people should get an opportunity to voice their opinion. I'm profusely thankful to the Vice President of India and Chairman Rajya Sabha for nominating me as a panel of Vice Chairmen. I will discharge my responsibility as per the rules, regulations, and with utmost care and integrity. No, I'm extremely grateful to Honorable Chairman Rajya Sabha Shri Jagdeep Dhankar ji, because his dynamism, his leadership, and his mentorship has always been a blessing for me. And in that sense, Honorable Chairman has always looked out and especially promoted and encouraged young parliamentarians like me. And in 2022, when he came to office, initially at the first time, he immediately had appointed me to the panel of vice chairman. And thereafter, there were two lady members from my party who were also appointed to the panel of vice chairman. And today, by reappointing me, I'm deeply grateful to Honorable Chairman Shri Jagdeep Dhankar ji. According to the rules, the chairman shall, from time to time, nominate from amongst the members of the council a panel of vice chairmen, any one of whom may preside over the council in the absence of the chairman and the deputy chairman, when so requested by the chairman, or in his absence by the deputy chairman.
माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 367 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुबंध पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा के सदन पटल पर रख सकते हैं। माननीय मंत्री जी, Sir, I move the following, that this House do take up for the consideration the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023, given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in the cash for query in the Parliament, with reference to the examination, investigation of the unethical conduct of Sri Mahua Moitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. एक मिनट सबको। Okay. We don't have the copy of the motion. We don't have the माननीय सदस्यगण, आज जिस विषय पर विचार किया जा रहा है वो विचार और प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है वो हम सबके लिए पीड़ादायक भी है, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब इस सभा को अपने प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उचित निर्णय लेने होते हैं। माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र नियमों, उच्च मर्यादाओं से चलता है। ये सदन हमारे देश की सर्वोच्च पीठ है। पिछले 75 वर्षों की हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में हमारे सदन की, हमारे लोकतंत्र की एक ऊंची मर्यादा स्थापित हुई है। पूरा देश उच्च संसदीय परंपराओं के लिए हमारी ओर देखता है। इन्हीं उच्च परंपराओं की बदौलत हमारे लोकतंत्र की पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान है। माननीय सदस्यगण, पिछले 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र निरंतर सशक्त और परिपक्व हुआ है। जनता के बीच हमारी विशेषता लगातार बढ़ी है। जनता ने हमें इसलिए चुनकर भेजा है कि हम सदन में बैठकर उनके विकास के लिए, उनकी कल्याण के लिए, उनकी आशाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं को इस सदन में बैठकर पूरा कर सकें। लेकिन हमारे लोकतंत्र की इस गौरवशाली यात्रा में समय समय पर हमारे ऐसे अवसर भी आए हैं जब हमने इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा, सदन के उच्च मापदंडों को बनाए रखने के लिए उचित निर्णय भी किए हैं। इस सदन के उच्च मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्य ऐसे मूल सिद्धांत है जिसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम शुद्ध अंतःकरण से, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से इन सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम अपने उच्च आचरण में शुद्धता रखें, शुचिता रखें, अपने व्यवहार को से किसी प्रकार का कोई को कष्ट न हो, हमारे व्यवहार से हमारे कार्य में कोई संदेह न हो, हमारा आचरण ऐसा न हो जिससे कि लोकतंत्र की उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा को कोई ठेस पहुंचे। इस सदन की विशेषता
और उच्च मापदंड को बनाए रखने, उन्हें समर्थित करना इस सदन के सदस्य रूप में हम सबका सामूहिक और सर्वोच्च दायित्व है। माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूं हम सब यहाँ पर जिस बात पर विचार करने जा रहे हैं वह हम सब के सामूहिकता से विचार कर रहे हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, संवेदना के साथ विचार कर रहे हैं। हमें किसी भी सदन में किसी भी सदस्य को, मेरी कोशिश रहती है न मैं सदन से उसको निलंबित करूं, कभी कोई कार्रवाई करूं। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले। समय समय पर मैंने कोशिश भी की कि सदन की मर्यादा बनी रहे, और उस मर्यादा बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े तो सदन की मर्यादा के लिए करने पड़े। और इसीलिए आज भी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें मर्यादा, सदन की गरिमा हम सबके लिए सबसे ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको इस सदन के गौरव, सम्मान, नैतिकता और अस्मिता को अक्षुण्ण रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे आशा है इस विषय पर जब हम चर्चा करें तो सदन की मर्यादा, उच्च कोटि की मर्यादा और पूरे देश में इस सदन के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बना रहे। और व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है, हम व्यक्तिगत आचरण में भी हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम लोकतंत्र की उच्च मर्यादा को कायम रख सके। मैं नियम 316(e)(2) के विषय पर अधिकतम आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि ये टाइम तो बढ़ाइए ना प्लीज। ठीक है, दैट यू कंसीडर आधा घंटे में सब पार्टी बोलना चाहिए। श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर, आपने अपना पीड़ा जताई और ये सुनकर हमें ये यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे स्पीकर साहब एक कस्टोडियन की होने के नाते सही दिशा पे सही निर्णय जरूर लेंगे। सर, मैं छोटी सी 2-3 बात कहूंगा क्योंकि हमारे पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पे अपना बात रखेंगे। सर, मैं ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे की बाद आज ये पेपर, मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे की साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर, ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर, वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। ये सर देखिए 106 पेजेस है, और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली, मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे की बाद यहां से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा पौने घंटे निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं? अब बताइए। ये भाई सब एक कॉमन सेंस पे आधार पर मैं ये पूछना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो, और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें, और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर, जो आप चाहते हैं, मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा को पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पे चर्चा करें। क्योंकि सर
ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नजीर बन के जाएंगे। ये नया सदन एक नजीर बनाने जा रहे हैं। इसमें सर ये नजीर में कोई खामियां ना रहे। सर मैं एक छोटी सी बात, मान लीजिए सर कोई न्यायालय में भी अगर किसी को सजा होता है, वो भी मौत की सजा होते हैं, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मोइत्रा को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए नहीं? आप खुद बताइए सर, मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे, ये मेरा शंका है। सर जिस सदन में महिलाओं को महिमान्वित किया जाता है सर, this has to be expunged. रोजाना महिला को सर महिला सर, महिला ये क्या चल रहा है सर? तो चर्चा मेरिट पर चलना चाहिए सर। इसमें जो कि महिला में जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पे है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात करे, और कलंकित वगैरह जो हुआ है, सारे देश इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, अभी हमारे पूरा डेमोक्रेसी का जो एक कलंक है, वो कलंक के बारे में वो बात करो। क्या करें? अरे हम क्या ज्यादा कुछ मांगे हैं? ये रक्षा मंत्री जी है, मनीष तिवारी जी हो गया ना इनका विषय। 1 मिनट राम गोपाल जी प्लीज। अध्यक्ष जी, मुझे 31 साल वकालत करते हो गए, और कई बार ऐसा मौका आया है कि जल्दी में बहस करनी पड़ती है, पर शायद आज पहली बार किसी कागज को बगैर संज्ञान में लिए मैं बहस करने के लिए खड़ा हुआ। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते कि इस कागज को, ये जो रिपोर्ट है, इसको संज्ञान में लेकर, इसको पढ़कर अपनी बात एक अच्छे ढंग से हम इस सदन के समक्ष रख सकते, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामले के ऊपर ये सदन फैसला करने जा रहा है। पर अध्यक्ष जी, मैं 4-5 चीजें जो बहुत ही बुनियादी हैं और जो नेचुरल जस्टिस से और जो मौलिक अख्तियार हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर मैं जरूर अपनी बात कहना चाहता हूं। पहला सवाल यह है अध्यक्ष जी, that can the procedure of the ethics committee override the fundamental principle of natural justice, which is the organizing principle of every justice system in the world? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने जो अखबारों में पढ़ा उससे बहुत साफ तौर पर यह चीज निकल के आई कि जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर है? ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको
अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मित्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मेरा दूसरा सवाल ये है अध्यक्ष जी, मैंने रूल जो 316 डी है, रूल 316 डी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। अब मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं कि फौजदारी के कानून में दो चीजों में फर्क है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग में फर्क है। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। The ethics committee at best can make a recommendation that whether a person is guilty or a person is innocent. It is this house sitting as a jury which has the powers to decide the quantum of punishment, Mr. Speaker. So therefore, the recommendation of the ethics committee is fundamentally flawed in my respectful submission. Okay. तीसरा अध्यक्ष जी, आज सारी पार्टियों ने 3 लाइन व्हिप इशू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। टुडे दिस हाउस इज सिटिंग एज अ जज एंड अ जूरी इन एन impeachment proceeding, or when you are considering the report of the privileges committee, or you are considering the report of the ethics committee, can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this house should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this house. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues, and I am afraid that cannot be done through whip-driven tyranny. Okay. So therefore, the अध्यक्ष जी, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, अभी तो बुनियादी सवालों के ऊपर हूं, रिपोर्ट्स में तो मैं आया भी नहीं हूं, जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट। टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। वी आर नॉट सिटिंग as parliament today. We are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Please. एक मिनट, माननीय सदस्यगण, ये संसद है, ये कोर्ट नहीं है। ये आप सीनियर हैं, आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें, आपके बहुत विनम्रता के साथ 4:30 मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर, अध्यक्ष जी न्यायाधीश नहीं हूं, अध्यक्ष जी सभापति हूं। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। टुडे वी आर सिटिंग एज अ जूरी, वी आर सिटिंग एज जजेस to decide the fate of one of our colleagues. My next question, Mr. Speaker, sir. माननीय सदस्य, एक प्लीज, इस जुडिशियली में और सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यहाँ निर्णय नहीं कर रहा, यहाँ निर्णय सभा कर रही है। आप गलत तरीके के तर्कों को यहाँ पर मत रखिए। ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी।
और हमने किसी के लिए ऐसे ही आपने कहा इसलिए आपने हमने तो थोड़ी कहा है कि ऐसे ही वोट करो, हमने तो व्हिप किया है प्रेजेंट करने के लिए। प्लीज एक मिनट बैठिए। ये सभा निर्णय कर रही है और जब सभा निर्णय करती है तो सभा निर्णय करती है। प्लीज। मैं बहुत अदब और सत्कार के साथ एक बात पूछना चाहता हूं। क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है कैन ही बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर? आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इशू करते हैं, यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर. This is the complete antithesis of natural justice. It is the complete antithesis of natural justice. The fundamental principles of natural justice are being thrown to the winds in this house. I would urge you, Mr. Speaker, sir, that the whip needs to be withdrawn because we are sitting as a jury. The whip needs to be withdrawn. आप अभी अध्यक्ष जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। हीना गावित जी, मैं अध्यक्ष जी अगली बात पे आता हूं। एक अगली बात पे आता हूं। एक मिनट आप कंक्लूड कर दो। अध्यक्ष जी, संविधान की धारा 105, आर्टिकल 105 of the Constitution gives powers, privileges and immunities to members of Parliament. I want to read out Article 105(2). Mr. Speaker, sir, Article 105(2) says, no member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, vote or proceedings. Mr. Speaker, sir, 105(2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity. I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the House. And his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is, when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called into question in this August chamber? Can this? माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ एक सेकंड आप बोलिए, ले दीजिए। अध्यक्ष जी, my humble submission is, can this August House override the founding document of India which has brought this House into existence? And the answer is no. Article 105(2) gives immunity, absolute immunity for anything done in the House. And my last point, Mr. Speaker, sir, when the Supreme Court of India interpreted Article 105(2) in P.V. Narasimha Rao's case, they clearly and absolutely said that anything done in this House, even if it is allegedly actuated by bribery, cannot be called into question in any court of law. So therefore, Mr. Speaker, sir, these proceedings should not have been held, and I would urge you to withdraw. महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए, तो उन्हें मैं याद करवा दूं, 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने यही 2005 में किया था। अभी सर, ये पहली बार उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी।
सर, यहाँ देश में ये कोई पहली बार ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। 1951-52 में श्री मुदगल जी, जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। लेकिन आज का ये जो माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है, ये और पिछले प्रकरणों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं, और मिस्टर हीरा नंदानी, जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है, मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं, कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा, और उसमें मिस्टर हीरा नंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है, और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है, तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में, इन्हीं मिस्टर हीरा नंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं, तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल, यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमिटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरा नंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमिटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला, और मिस्टर हीरा नंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरा नंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमिटी को दिया है। और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है, वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है, उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। इसी के साथ में आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यहाँ बार बार जो बात हो रही है कि नेचुरल जस्टिस की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग सांसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद हम सबको मेंबर्स पोर्टल पर एक रूल्स के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फॉर्म मिलता है। हम सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, वो फॉर्म पे साइन करते हैं और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि हम हमारा आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स में लिखा है, हर संसद सदस्य उस पे साइन करता है, हम सबने साइन किया हुआ है। और यहाँ पर जो माननीय सांसद महोदया है, उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बैंगलोर में और यूएस में। 4 अलग अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद है, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, वो आप खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ प्रूव हो चुका है। सर, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को यहाँ रिस्पेक्ट करना, ये हमारा काम है। जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनको पूछने लगाता है। उनकी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उनको चिट्ठियां लिख के देता है। अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उनको लिख के देता है। और इतना ही नहीं,
अगर कोई उनको पैसे दे तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सदन में सवाल पूछते हैं। इस तरह से सभी सांसदों की इस एक इंसिडेंट के कारण छवि खराब हो रही है। मैं यहाँ आपको ये बोलना चाहूंगी कि माननीय सांसद के इस अनएथिकल कंडक्ट के कारण आज सभी सांसदों की छवि ये देश भर में खराब हुई है। केवल देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में यहाँ खराब हुई है। अभी यहाँ पे कोई द्रौपदी का चीरहरण की बात कर रहा है, अलग अलग देवियों का नाम लिया जा रहा है। हम सब यहाँ सांसद है, फीमेल मेल इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम लोग हमारे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते हम यहाँ आके बैठते हैं। हम यहाँ जब आते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं कि हम ये पार्लियामेंट की मर्यादा रखेंगे, हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का सवाल पूछेंगे और हम हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि के नाते यहाँ आके बैठते, ना कोई प्राइवेट एंटिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट बनके। तो मुझे यहाँ आपके माध्यम से यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूंगी बड़े ही विनम्रता से कि यहाँ एथिक्स कमिटी ने रिस्पोंडेंट को भी सुना है, कंप्लेनेंट को भी सुना है, एफिडेविट का भी पूरा यहाँ पे अभ्यास हुआ है और नेचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है, जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी वहाँ पे कमिटी ने पूछा। और जो यहाँ पे बार बार अपमान की बात वो लोग करते हैं, तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जब मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदया से जो एफिडेविट प्राप्त हुआ है वो एफिडेविट के कंटेंट से रिलेटेड ही सवाल उनसे पूछे गए। उन्हें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिनसे उनको ये लगे कि हमारा यहाँ पे चीरहरण हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे विनम्रता से अनुरोध करूंगी कि कमिटी ने यहाँ पे जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ रखे हैं, इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए और हमें ये देश को और पूरी दुनिया को हमें ये मैसेज देना है, हमको ये उनको बताना है कि यदि इस संसद का कोई सदस्य अनएथिकल कंडक्ट करता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बाहर काम करता है, तो ये सदन वो सदस्य को सदस्यता से बाहर निकालने का काम भी ये सदन कर सकता है। एंड नोबडी इज अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड। धन्यवाद। कल्याण बनर्जी जी। सर, allegations against Mahua Moitra have been placed by the honorable member just now, I heard. So who can be the best person to reply to these allegations? It is a parliament. It will be on record, that speech. But if Mahua Moitra be not allowed to deliver her explanation, the parliament's idea would not be fulfilled. So I would request you, sir, from our party, as a speaker, Mahua Moitra be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी। No. What I propose, my party's spokesperson will be Mahua Moitra herself, because the allegation is against her. Wild allegations have been raised. Whether it is true or wrong, let it be spoken by her, sir. Sir, the House will go to take a decision. Will expel her. सर, मान्य जो सदस्य का निष्कासित का आज प्रस्ताव आ रहा है, जिसके रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो एथिक्स कमेटी के द्वारा पूरा चर्चा हुआ है और सभी बिंदुओं के बारे में विचार विमर्श हुआ है और समिति ने आज अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आपके द्वारा आपके अनुमति के साथ रखा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है।
ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। बिल्कुल कल्याण मनोज जी, नौ पुरानी परंपराएं मेरे पास भी पड़ी हुई है, जिसका मेंशन संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा है। हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय सोमनाथ जी चटर्जी, प्रणब मुखर्जी यहाँ पर थे, उन सबकी रिपोर्ट पुरानी केस कोर्ट इस विषय पर हुई थी और उस पर उन्होंने अध्यक्ष ने जो परंपरा नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं। और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है। और 9 मैं रिकॉर्ड रख के टेबल पे बात करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करता हूँ। मैं आप अगर डिबेट करेंगे तो मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा। मैं रिकॉर्ड बोलता हूँ। और यहाँ पर इस सदन में, एक मिनट प्लीज, इस सदन में परंपरा रही है कि जो पुराने अध्यक्षों के जो कुछ भी परंपराएं हैं उनको नए अध्यक्ष हमेशा परंपराओं को पालन करते हैं, ये उनके होता है। और स्पीकर का डायरेक्शन का एक बुक है जी, पढ़ के देखो। आप नहीं बोल रहे कल्याण जी, आगे बुलाऊं? हाँ बोलिए, सुदीप जी बोल रहे, सुदीप जी बोलो। On this house, in Parliament, her speech has been recorded, and it is now the property of the house. But against whom you are going to expel from 17th Lok Sabha, it is known to everybody. Today they have placed the report in Parliament, but the whole report has been exposed to the media long time before. It is nothing new. It is the only ethics committee who have done this wrong. They have exposed it to the media. Media exposed the report. It is not that they are submitting the report today. So against Mahua, report has been placed. One speaker has said so many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for a few minutes? What's wrong in it, sir? So I urge upon you with folded hands. Let Mahua speak on behalf of Trinamool Congress Party as a speaker of our party. एक मिनट सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप वरिष्ठ सदस्य रहे, आप भी वरिष्ठ सदस्य रहे, उस समय आप भी माननीय सदस्य थे यहाँ पे। एक जब परंपराएं हैं और पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने जो कुछ भी रूलिंग, जो कुछ भी अपने वक्तव्यों में देते हैं उसको हम बोलते हैं अध्यक्षीय निर्देश, और उस अध्यक्षीय डायरेक्शन को हम हमेशा पालन करते आए हैं और उसको एज ए रूलिंग की तरह मानते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। मैं आज कोई नई परंपरा स्थापित नहीं कर रहा, कोई नई परपाटी उपस्थित नहीं कर रहा। अगर ये परंपरा रहती और मैं नई परंपरा स्थापित करते तो आपको बोलने का अधिकार था, मैं मना नहीं कर सकता था। लेकिन आपने परंपराएं लागू किए, आपने परपाटियां लागू किए। हाँ बोले सर। मैंने सर आपको बहुत पहले चिट्ठी भी लिखी है सर। ये जो बात किए जाते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन थी। वो स्टिंग ऑपरेशन किए थे एक जाने माने न्यूज साइट कोबरा पोस्ट, और उसके चलते सारे छवि सबके सामने सारे तस्वीर स्पष्ट थी। वो सर चौक और चीज एक ना करे तो बेहतर है सर। ओके सर इतिहास है। आज सर एक कलंकित अध्याय आप मत रचा करो सर। जब महिलाओं के बोलो कल्याण जी सर, उनको अलाउ कीजिए। नो काइंडली अलाउ नहीं, कल्याण जी आप आप कल्याण जी बोले तो मैं नेक्स्ट को बुलाऊंगा। ऑन रिकॉर्ड रखते हैं, ऑन रिकॉर्ड रखते हैं ना, पार्टी থেকে ऑन रिकॉर्ड रखते हैं। कल्याण जी आप बोलिए। बोलो यस
Sir, the Honorable Speaker, kindly see that the fair trial only would be there when an affected person is being heard. If an affected person is not heard, there cannot be any fair trial. There cannot be any fair trial. This is the House, maybe Parliament. Sir, with great respect to you, whatever I am saying, kindly do not take any exception. It's a Parliament, it's a House, members, but today all we are deciding the right of a person. When we are deciding the right of a person, we are all acting as a quasi-judicial body. And before a quasi-judicial body, a affected person should be heard. Sir, I will request you, kindly allow Mahua Moitra to be heard. That is the request I am going on making. Sir, if this is a disturbance, sir, when we speak, then no. Please. Against us would be privilege would be there. Against us, everything would be there. And they will be going on disturbing everything, every day. Sir, you see, fundamental principles of law, that a person against whom a charge has been brought, and the persons who are bringing the charges, that should be established in accordance with the procedure of law. Sir, here, this case will clearly reveal that. Because of who is the main man? Main man was Darshan Hiranandani, who has relied upon his statement. His name is Jai Anand Dehadri, who has brought it, one of the Honorable MP Nishikant Dubey. On what basis it is going on? It is going on the basis of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. Sir, before the committee even, the Darshan Hiranandani was not brought as a witness, and he has not testified. This is his affidavit. This affidavit, no affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit, whatever I have said in the contents, these contents are correct, and what I am saying. Thereafter said in a quasi-judicial proceeding, right of cross-examination is a fair hearing. Sir, right of hearing is not a fanciful, it's not a right of fanciful. It has to be made meaningful right. Whenever they are making the allegation, whether it is a Dehadri or the Darshan Hiranandani or the Nishikant Dubey, that's why, sir, Mahua Moitra was having a right to cross-examine each and every three persons. That has not been allowed. Sir, it is not the point. What has happened earlier, this is not the point. Point is that, sir, law is not remain in an island. Law is being developed in our country because of the interpretation of the law by the Supreme Court of India. It has been clearly said by the various judgments by the Supreme Court, the affected persons has not been given to defend himself or herself in a proper manner, right manner. Then it's not a case, sir. It is not. This is a violation of the principles of natural justice. What is the violation of principles of natural justice? Principles of natural justice is implicit in Article 14 of the Constitution of India. Article 14, it is implicit in the Article 14 of the Constitution of India. Therefore, not only the right of hearing is violated, sir, Mahua Moitra's right as protected under Article 14 of the Constitution of India has been violated by the Ethics Committee vis-a-vis today by the House itself. There was a violation, constitutional violation is being made. Sir, next. Sir, now, sir, come to the to peace. Sir, kindly see. Repeatedly, it is being referred regarding the sir, 2005 cash for query case. Kindly come to report page 18. In the page 18, it has been said under serial number 12. Sri Pawan Kumar Bansal was appointed as chairman of the said committee. Committee examined Shri Anuruddha Bahal. Message, sir, आपको time देना होगा sir. Today, sir, time देना होगा sir.
Sir, Susani Raj and Sri Kumar Badal of the Portal Corporate Corporation, so and so, was and the member have been examined. They have been examined. Here, sir, the Hiranandani has not been examined at all. Hiranandani has not been examined. It is just an I was, please, sir. Sir, if you are the honorable minister, always you have a right, but kindly do not excuse me. Sir, this has been, he has the right. Okay. Now, Muddal, sir, give me time, sir. Please give me time. You have not allowed Mahua Moitra to speak. Kindly allow me to speak, sir. Now, sir, kindly come. This report speaks about, I am coming, sir. What is the, kindly come. Serial number 43. It has been said that, quoted his car, who has said? Darshan Hiranandani has not said. What Joy has said, everything has been hidden here. Sir, please, sir, sir. I am coming, sir. Other points are there. Kindly wait. Kindly give me a chance. Today I am just praying before you. Kindly render justice to me. आप एक मिनट में बात कर दें. Not एक शब्द में नहीं होगा. एक मिनट बात कर दें. Please, sir. Sir, it has been, sir, you see, relied upon this section 43. Section 43 of the Information and Technology Act said it's a violation of section 43. Where is this section 43 has said, if a password, even let's assume for the argument's sake, allegations are correct. Where this section 43 has said, if password is given to anyone, it's an offense under the Information and Technology Act. If anyone uses my computer without my consent, then section 43 is applicable here. This has not been done, sir. Okay. Now, sir, please, sir, please. For God's sake, please. Sir, kindly see. The point is, here is the finding. Kindly see. Finding is, the recommendation is kindly give me this chances. Kindly see the recommendation conclusion. Conclusion is, sir, the proof, it has been proved, cash has been taken. Where is that? Where is this finding? Where is this finding on facts? How much cash? There is no finding. There is not based on evidence. Now I am coming a very important, sir, I am coming a very important question. I will conclude. Sir, I should have given a chance. Today, I am concluding, sir. Sir, with great respect to the Honorable Speaker, with great respect to all the members of this House does not have power to remove someone as a member. Constitution has provided provision for disqualification. This disqualification has been provided by the Constitution under Article 102 and 10th schedule of the Constitution. It is not coming within that. Sir, you are having the power to suspend under Rule 374 of the rules of the Parliament itself. Therefore, let's assume for argument's sake, there is no power of removal by the House itself to remove to expel, and to remove the Mahua Moitra. Constitution does not permit, rule does not permit, even any precedent has been done. That's contrary to the rules, that's contrary to the precedent. No precedent, no rule can stand, sir, above the constitutional provision. मैं दो बातें आपको स्पष्ट करना, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं से तो, और वरिष्ठ अनुभव भी है। मुझे बार बार कह रहे हैं कि जस्टिस नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। एक पार्लियामेंट का प्रोसीजर नियम प्रक्रिया बनी हुई है। नियम प्रक्रियाओं के तहत जो कमिटीज होती है, उस कमिटीज के अंदर चर्चा होती है, एविडेंस होते हैं, पक्ष विपक्ष सुने जाते हैं। वो कमिटी का प्रोसीजर है। ये पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर की पालना नहीं होती कि आप किसको बोलने का न्याय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस कमिटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। आप फिर समझे बात को, हम कमिटी के प्रस्ताव पर, ये चीजें होना चाहिए कमिटीज पर। कमिटी न्यायालय की तरह काम करती है, सबके पक्ष सुनती है, करती है, लेकिन
ये सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता, ये तो उस कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। क्लियरिटी है ना इस बात पर? कोई कंफ्यूजन है? नो। देखो, मैं आपकी तरह विद्वान वकील नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मैं नियम के तहत बात कर रहा हूं, बिना नियम के बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप देखिए, आप दो बड़े वकील हैं, जस्टिस है, 2 वकील, आप तीसरे वकील, आप वकील हैं तीनों वकील। एक बात बताइए कि ये समिति के अंदर ये सब चर्चाएं होनी चाहिए, ये हाउस में थोड़ी चर्चा होगी। गंभीरता इससे भी पता चलती है कि टीएमसी के अपने सदस्य नहीं आए, प्लीज वही साथ में नहीं आते, अधूरे। प्लीज, ये सब प्रोसीजर, एथिक कमेटी हो, विशेषाधिकार कमेटी हो, अपनी जितनी भी कमेटियां हो, उन कमेटी प्रस्ताव करती है, उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है। नो, आप उस पर सवाल उठा सकते हो ना, आप यहां पर ये नहीं कह सकते कि न्याय करो, ये तो उस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। नो, गिरधारी यादव जी प्लीज, नो, आप उसको गलत तरीके से इस सदन को पेश कर रहे हो, ये सदन इसके लिए नहीं है। गिरधारी यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरधारी यादव जी, आज मैं इस सदन में जो खड़ा हुआ हूँ बड़ा ही पीड़ादायक है। एक तो मैं माननीय सदस्य को एक्सपेल कर रहे हैं, दूसरे साथ ही साथ ये दुर्भाग्य है इस सदन का कि हमारे माननीय निशिकांत जी को तो हमने क्रॉस करने के लिए बुला लिया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी उसने एफिडेविट दिया, उसको नहीं बुलाया। तो हम तो एमपी से नीचे हो गए, क्यों बुलाया गया निशिकांत जी को? यदि एफिडेविट पर ही विश्वास करना था निशिकांत जी के माननीय सांसद को, वो विश्वास क्यों किया गया? जब यह किया गया था तो दर्शन को भी बुलाना चाहिए था। ये तो दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, ये तो मेंबर ऑफ द कमेटी, ये क्या बोल रहे हैं? ये मेंबर ऑफ द कमेटी ये क्या बोल रहे हैं? और ये आपके निर्णय के खिलाफ बार-बार सजा नहीं हो सकता है। हसन मसीदी दर्शन, हम लोगों ने कमेटी में मांग किया था, हमारे कमेटी ने कहा था बुलाएंगे और नहीं बुलाया, कोई चर्चा नहीं हुआ। हसन मसूदी जी, हसन मसूदी जी, आप बोलना चाहते हैं? हसन मसूदी जी। Sir, honorable speaker, sir, there can be no disagreement with the observation made by you that it is not the honorable speaker that has take it. It's the honorable speaker who has to take a decision, but it is the house that has to take decision. But that must not make us depart from. ये हसन मसूदी जी आपके सदस्य हैं। Sir, हसन मसूदी, sir, हसन मसूदी जी, sir, there can be, sir. आप बोलिए ना गिरधारी जी, आप गिरधारी जी बोलिए ना। नहीं, आप वहां से बोलिए, अपनी सीट पे जाके बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ माइक चालू नहीं होगा आपका, वहीं बोलो अपनी सीट पे जाके। आ गया तो बोलेंगे, नहीं आज क्या करें? अध्यक्ष महोदय, आपको बता रहे हैं, हम लोगों को आचार समिति अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन हीरानंदानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी, हम हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ, 2 मिनट में खत्म मीटिंग। आए उधर से बोला डिसेंटमेंट दीजिए, डिसेंटमेंट भी शामिल नहीं किया आपने। अगर सब एथिक्स कमेटी के मेंबर को मौका देना चाहिए, और एकदम फॉल्स रिपोर्ट, कोई चर्चा नहीं, हमारा प्रतिष्ठा का हनन किया गया। हम एमपी को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते हैं जो आरोप लगाता। न्याय प्राकृतिक होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे हैं आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप बताइए न्याय दिखना भी चाहिए। फिर आप गलत, न्याय दिख नहीं रहा, आपने नहीं बुलाया और हमको बुला लिया। और जहां तक पासवर्ड, एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं है, ये सभा का अधिकार है। आप अपने शब्दों को ठीक से बोलो, कोई मैं न्यायाधीश थोड़ी हूं जो मैं निर्णय कर रहा हूं। ये सभा का अधिकार है, अगर सभा का अधिकार नहीं तो फैसला सुनाया था मैं। ये सभा का अधिकार है।
ठीक है अध्यक्ष महोदय। और जहां तक शपथ पत्र का, शपथ पर नहीं हो सकता, क्रॉस पर होना चाहिए था। बिना काम का शपथ पत्र पर किसी को सजा नहीं दे सकते। और हमारे एक माननीय हमारी डॉक्टर हिना जो सांसद सदस्य हैं, उन्होंने कहा पासवर्ड कभी नहीं दिया गया। पासवर्ड महुआ मोइत्रा जी के पास था, भले लॉगिन कहीं से हो, और हमारा भी पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मेरे पीए के पास है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया इस बार लोकसभा में डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो आज तक मेरा प्रश्न दूसरा करता था, मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं। बहुत सारे एमपी नहीं बनाते, बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो 2 घंटे में पढ़ लिए। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़ पाए। और मैं प्रश्न अपना कभी नहीं करता हूँ, मेरा पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है। और मैंने इस बार एक भी क्वेश्चन डर से नहीं लगाया। लोकतंत्र में डराया गया है, आप मैंने नहीं किया, हमको आता ही नहीं है। हमको तो कंप्यूटर चलाना अध्यक्ष महोदय नहीं आता है। हम तो लिख के दिए, मुझे दिया जाए, नहीं दे रहे, नहीं जानता हूँ क्या करें। हम तीसरी बार सांसद हैं, 4 बार एमएलए हैं, बुढ़ारी में सीख सकते हैं हम। बूढ़े का वो पोस्ट मांगता है, लालू जी कहते थे, नहीं हो सकता है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, 377 बड़ी मुश्किल से डाला, इसके पहले पूरा प्रश्न करता था। नहीं जानते तो नहीं जानते, इसलिए बिना काम का बाजबरदस्ती, ये मनुस्मृति में कहा गया है सबके लिए अलग अलग कानून होगा, वही मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी वाली लागू करना चाहते हैं। ये मनु का धर्म नहीं है, ये मनु का समय नहीं है, लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र में आप लोकतंत्र का गला मत दबाइए, लोकतंत्र का हत्या मत करिए। महुआ मोइत्रा का जो प्रश्न है, 1 मिनट प्लीज, अपराजिता 1 मिनट, माननीय सर प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्न खुद बनाए और खुद डाले। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप। नो, इस संसद की गरिमा को मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मैं सभापति हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है सभी मान्य सदस्यों की गरिमा को बनाए रखना। आप इस बात से सहमत हैं, इनकी बात से? क्या मान्य सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाता, हमारे प्रश्न कोई और बनाता, ये बात से सहमत हैं क्या आप? क्या करेंगे? मैं जो बताता हूँ, महुआ मोइत्रा को आप 10 मिनट का जगह 5 मिनट नहीं तो 7 मिनट बोलने दीजिए, इसमें अच्छा रहेगा ये डिबेट। नहीं, आप उनकी बात से सहमत हैं क्या? कौन बात पर? गिरधारी जी यादव की बात पर। क्वेश्चन हर व्यक्ति क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन जानता नहीं कैसे कर सकता है। ये बात है सर, वो एडमिट करता है कि मैं नहीं जानता, मेरा पीए को पासवर्ड दे देता, उन्होंने ये बताया। आप एक दिन टेस्ट कराए ना सब मेंबर को, कि तुम्हारा पोर्टल खुल के तुम पेपर निकालो। उन्होंने ये भी आई वांट टू सी पोर्टल खुल के तुम रिपोर्ट निकालो। आप 10-10 करके एमपी को आपका घर में बैठा के आप कोशिश करके देखिए। माननीय सदस्य, उन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं क्वेश्चन ही नहीं बनाता हूं। नो, क्या है, चलिए, कहा आप तो ले जाते हैं। हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी भी डाल सकते हैं लिख के, दोनों है, ऑनलाइन भी हार्ड कॉपी भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं, आपने मुझे इस अहम विषय पर बोलने का मौका दिया। संक्षिप्त में बोलना आप। यह विषय बहुत अहम है, क्योंकि यह संसद की मर्यादा के विषय में है। यह विषय अहम है क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम संसद की मर्यादा की बात कर रहे हैं, हम संवैधानिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। और जब
एक व्यक्ति किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुना जाता है तो वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करता है। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी बड़ी विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम इस जिम्मेदारी से चूक करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेंगे। और जितने भी विपक्ष के मेरे बंधु बैठे हैं, मैं एक ही प्रश्न करना चाहती हूं कि यह जो मैडम महुआ मैत्रा हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें, या गलत था या सही था। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी सर, मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर हम सुनना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी और इसी वजह से हमने सर एफिडेविट हमने पढ़ाई की। श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय अध्यक्ष, मैं सर उसके बाद कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट को भी सुना और उसके पश्चात हमने रिपोर्ट दिए हैं और रिपोर्ट में कुछ प्रस्ताव दिए गए। मुझे लगता है मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रस्ताव मतदान के लिए रखने का मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा रखे प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा सांसद द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन के प्रश्न पूछने के बदले नकदी के प्रत्यक्ष संहिता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता को विचार करने के संबंध में जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत। माननीय मंत्री जी, Sir, I beg to move the following, that this House do agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on Complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Srimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in cash or query in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimati Mahua Moitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा 15 अक्टूबर 2023 को सुश्री महिमा मोत्रा सांसद के खिलाफ दी गई सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संदर्भ में अपने अनैतिक आचरण की शिकायत पर दिनांक 8 दिसंबर 2023 को सभा पटल पर रखे गए आचार संहिता की प्रति रिपोर्ट में निहित सिफारिशों से सहमत है। जो सदस्य इसके प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए, जो विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री महिमा मोत्रा के निष्कर्ष समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। Sir, I move the following with your permission, that this House, having taken note of first report of the Committee on Ethics on complaint given by Dr. Nishikant Dubey, MP, against Srimati Mahua Moitra, MP, wherein she has been found to be the guilty of
unethical conduct and contempt of the House for sharing her Lok Sabha credentials, that is user ID and password of the Lok Sabha members portal, to unauthorized person, and its irrepressible impact on the national security, wherein her conduct has further been found to be unbecoming of a member of parliament for accepting illegal gratification through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolve that continuance of Srimati Mahua Moitra as Member of Parliament, Member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. John Brittas. I introduce the bill, sir. The Antiquities and Art Treasures Amendment Bill 2023.
Shri Sujit Kumar to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Sujit Kumar. Sir, I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2023, insertion of sections 24 capital A, 300 capital A and 302 capital A. Shri Sujit Kumar to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the IPC. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. The voice is getting feeble. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sir, I introduce the bill. Shri Sujit Kumar. Sir, only after I give, I have to open the window. Sir, आपका काम था सरल कर दे रहा हूँ. So Shri Sujit Kumar. Sir, I introduce the bill. And you do it after the House approves it. And that is reflected through me. The Central Educational Institutions Reservation in Admissions Amendment Bill 2023, Shri Sujit Kumar to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Central Education. Just the bill, just the bill, just the bill. Sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Good. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sujit Kumar. Sir, I introduce the bill. The Representation of People Amendment Bill 2023. Shri Sandosh Kumar P to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sandosh Kumar P. Sir, I introduce the bill. Thank you. The National Commission for the Welfare of Youth Bill 2023. Shri Sandosh Kumar P to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The representation. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sandosh Kumar P. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Participation of Workers in Management Bill 2023. Shri Sandosh Kumar P to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Sandosh Kumar P. Sir, I introduce the bill. Thank you. The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of Articles 343, 344 and 348, etc. I move for leave. Sir. Shri R. Girirajan to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri R. Girirajan. I introduce the bill. The Black Money Recovery Bill 2023. Shri M. Mohammad Abdullah to move for leave to introduce the bill. Thank you, sir. I seek to move for the leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri M. Mohammad Abdullah. Thank you so much, sir. I introduce the bill. The Freedom of Marriage and Association and Prohibition of Crimes in the Name of Honor Bill 2023. Shri Ramnath Thakur to move for leave to introduce the bill. Move kiya. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye.
Good. Thakur Sahib said aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Ramnath Thakur. I introduce the bill. The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of Articles 124 and 217. Sir, Chairman, sir. Shri, sir. No, sir. I have to open the door. Shri V. Vijay ready to move for leave to introduce the bill. Now. Chairman, sir, reservation in judicial appointments for backward classes in No, the no. Supreme Court and High Court, sir. No. Sir, I move for leave to introduce Constitutional Amendment Bill 2000. Good enough. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri V. Vijay Reddy. Sir, I introduce the bills. The Consumer Protection Amendment Bill 2023. Shri V. Vijay Reddy to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce Consumer The question Protection is Amendment that Bill leave be 2000. granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Vijay Reddy forgot. Sir. Okay. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri V. Vijay Reddy. Sir, I introduce the bills. The Central Universities Amendment Bill 2023. Shri V. Vijay Reddy to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce Central Universities Amendment Bill 2023. The bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri V. Vijay Reddy. Sir, I introduce the bills. The Prevention of Custodial Torture Bill 2023. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the bill. Sir, with your kind permission, I move to seek the leave of the House for the introduction of this bill. To move the bill. To move the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Sir, I introduce the bill. Thank you so much. The Constitution Amendment Bill 2023, amendment of Article 51, capital A. Professor Manoj Kumar Jha to move for leave to introduce the bill. Sir, with your kind permission, I wish to seek the leave of the House to move this bill, which is all about fraternity. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Professor Manoj Kumar Jha. Thank you so very much, sir. I introduce the bill. The Payment and Settlement Systems Amendment Bill 2023. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the bill. Sir, I rise to seek leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Aye. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. I introduce the bill. Thank you, sir. The Indian Penal Code Amendment Bill 2023, substitution of sections 305 and amendment of section 375. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the bill. Sir, I rise to seek leave of the House to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik. Sir, I introduce the bill. The Adaptation of Climate Change, Resilience, Rehabilitation and Resettlement Bill 2023. Shrimati Vandana Chauhan to move for leave to introduce the bill. So I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shrimati Vandana Chauhan. I introduce the bill, sir. The Constitution Amendment Bill 2023, insertion of Article 16, capital A. Shri M. Shanmugam to move for leave to introduce the bill. Thank you, sir. I move to leave to introduce the bill, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri M. Shanmugam. I introduce the bills. The Motor Vehicle Drivers and Other Workers Welfare Fund Bill 2023, Shri M. Shanmugam, to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri M. Shanmugam. Sir, thank you, sir. I introduce the bills. The Representation of People Amendment Bill 2023, Shri Javed Ali Khan, to move for leave to introduce the bill. माननीय सभापति जी, मैं लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2023 को सदन में पुरस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Javed Ali Khan. मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं। The Constitution Amendment Bill 2023, Amendment of Articles 111, 200 and 201, Shri A.D. Singh, to move for leave to amend the bill. Sir, I move to leave for leave to introduce a bill further to amend the The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri A.D. Singh. I wish to introduce the bill. You With don't your wish. permission, I wish to introduce the bill. No, don't wish. You say I introduce the bill. I introduce the bill. The Special Financial Assistance to the State of Bihar Bill 2023, Shri A.D. Singh, to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri A.D. Singh. I introduce the bill. The Indian Penal Code Amendment Bill 2023, insertion of new section 377 capital A. Shri A.D. Singh, to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri A.D. Singh. I introduce the bill. The Witness Protection Bill 2023, Shri S. Niranjan Reddy, to move for leave to introduce the bill. Not present. The Compulsory Teaching of Lifestyle for Environment Life in Schools Bill 2023, Shri Biplab Kumar Dev, to move for leave to introduce the bill. I rise to leave to introduce the bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Biplab Kumar Dev. I introduce the bill. The National Commission for Fishermen Welfare and Support Bill 2023, Shri Mastan Rao Bida, to move for leave to introduce the bill. Not present. The Mental Health Care Amendment Bill 2023, Shri Surendra Singh Nagar. Sir, I move for leave to introduce a bill. Let me read out. Let me open the window for you. Shri Surendra Singh Nagar, to move for leave to introduce the bill now. Sir, I move for leave to introduce a bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Surendra Singh Nagar. Sir, I introduce the bill. The Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2023, Shri Tiruchu Siva, to move for leave to introduce the bill. Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Tiruchi Siva. Sir, I introduce the bill. It has come to an end. The list has come to an end. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee, in its meeting held today on the 8th of December 2023, has allotted time for government legislative business as follows: consideration and return of the following bills after they are introduced, considered and passed by the Lok Sabha: the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023, 2 hours. The Provisional Collection of Taxes Bill 2023, 1 hour. Honorable members, considerable time was taken today for the motions for introduction of about 70 private members' bills. I suggest we may continue with the consideration of private members' bill beyond 4:30 p.m. till 5:15 p.m. After that, permitted special mentions will be taken up. Is that sense of the House? The Constitution Amendment Bill 2022, amendment of Article 153 and substitution of Articles 155 and 156. Further consideration of the following motion moved by Dr. V. Sivdasan on the 9th December 2022, that the bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. On the 9th December 2022, Dr. V. Sivdasan had not concluded his speech while moving the motion. He may therefore be called upon to continue his speech. Dr. V. Sivdasan. Respected Chair of the House, here the Constitution Amendment Bill 2022, amendment of Article 153, substitution of Article 155 and 156 is a very important bill. It is in the public interest that the governor's position is to be filled not by the President under the advice of the Union government. The governor should be appointed by the state itself. The will of the people has to be respected. The governors cannot act as stooges of the Union government. Sir, currently, governors are working as tool of the institution of the Union government into the state. We have a lot of examples. The first article of our Constitution starts with the sentence that I quote, India, that is Bharat, shall be a union of states. It proves the importance of the states. Federalism is a part of the basic structure of our nation, basic structure of our Constitution. We all know the existence of our great nation. India is linked with the existence of its basic character, that is unity in diversity. If the diversity is ruined, then the majority of the people will be marginalized. That means they will lose their identity, language, culture, and habitat. It cannot help in their development. Diversity is the basic principle of the federal structure of our nation. Unity develops and strengthens its diversity. The very structure of our nation, India, as the union of the states, is built by the
positive spirit of love, affection, and great respect to the diversity. Respected Chair, our great nation, India was not built by the bricks or bullets and guns or the missiles and forts. It was built by the struggle of freedom fighters, tears of workers, and the sweat of peasants. Respected Chair, they have differences in their opinion, they have differences in their religion, languages, ideas, and identity, but they all are those differences, all above all differences, they had deep commitment to the values of humanity. Respected Chair, here what do we see? The rights of the states are reduced day by day by the union government. Respected Chair, not only have the rights of the states, the rights and the powers of Rajya Sabha, the Council of State also be introduced by the same union government through the money bills. Respected Chair, if we fail to protect the interest of the state as the representative of the states, then the great values of federalism will be destroyed by the rulers. Chair, respected Chair, world history reminds us the autocrats and their political parties have always attacked the diversity, and they have tried to establish their own power, and they have promoted only a monolithic culture. Respected Chair, the dangers of this attitude had been proven by the experience in various countries like Italy and Germany. We, as the representative of the people, as the representative of the state of India, should oppose the attack against the diversity, the steps against the legislative rights of the states, and undemocratic style of functioning of union government. In India, we have various identities. It is our strength. The great forefathers of our nation told us, unite against intolerance. Respected Chair, when the British colonial powers, they had divided the state of Bengal into West Bengal and East Bengal. The people of Bengal had united and fought against the bifurcation. Finally, the British Empire, they had to surrender in front of the massive movement led by the unity of the people. The leaders of the present colonialism, big corporates, have identified that one of the premier enemies of them is the unity of the people. That is why the ruling class of the country is practicing the same kind of colonial policy, divide and rule. The governors in the states, they are working as a tool of the imperialist policy of divide and rule. Wherever the state government is taking the stand to promote the secularism, then the governors are trying to promote the politics of hate. Respected Chair, in Kerala, the Assembly, everybody know that, the Assembly passed a resolution against NRC and upheld the secular values of the nation, secular values of the states, but the governor of Kerala had openly supported the politics of communal venom. Sir, the division of power is the part of our constitution. This is a part of our nation character. The powers are divided between states and union. But day by day, the powers of the states being reduced by the union government is utilizing the residuary powers to capture the powers of the states. Unfortunately, the governor has also become instrument to implement the plan of the union government. The education and forests, the two sectors which are the classic examples of violation of the division of power. Education and forests were the state subject,
But now the entire sectors are under the union government. Earlier, agriculture was in the hands of the states, but the intrusion of the union government has happened there too. The dam and the hydel projects in the states are also serious cases of capture of power. Earlier, the state governments have some powers related to the state. The state governments have taken the stance against these kinds of interventions. But some governors of the states has openly criticized the initiatives of the states. It has widened the gap between the elected state government and the nominated governors. The people of the state are requesting for more autonomy, but the union government is trying to pave the way for more centralized administration through the governors. The states like Kerala, Tamil Nadu, and Telangana are fighting for their rights in various ways. The representative of these states are here. Sir, kindly look at the approach adopted by the governors in the states. They are standing against the interest of their own state governments. The centralization versus decentralization is the core of the clash between states and the governors. Decentralization is the spirit of the age. That means the autonomy of the states, but also the autonomy of the Panchayati Raj institution. It is also a serious concern of the democratic movement in the country. Autonomy of the state does not mean the autonomy of the Raj Bhavans. Autonomy of the state does not mean the autonomy of the Raj Bhavans. The existing wrong notions of the government, governors and the union government should be corrected. The governors are holding the bills passed by the assembly in the name of concurrent list or reductory powers. The union government has so far ignored the demand of the states to place at least the residuary powers of legislation in the state list. The ministers are here, but the government, the union government, is not ready to hand over these residuary powers to the states. We have seen the examples of usage of residuary powers in many ways against the interest of the states. In agriculture sector, the union government has made new laws, but it was withdrawn by the people. Because of the struggle of the people, about 800 people martyred in the struggle. But the governors, the titular head of the nation, were silent. They did not make any single statement against the move of the union government, the move of the government against the people, the move against the farmers of their state. On the other hand, many times the governors have criticized the state government. When the state government intervened for the protection of the people in the state assemblies, in the state passed the assemblies, in the state passed the resolution against the anti-people laws made by the union government. The strongest position against the anti-people laws of the union government has been expressed by the Legislative Assembly of Kerala in the resolution. But the titular head of the state took the stand against the resolution, against the interest of the state and the interest of the farmers. Then what is the meaning of the usage? The head of the state, the word head of the state. We all know the federal structure and great values of the constitution will be destroyed by these kinds of legislations by the union government. In education sector, state government
have faced various issues. Everybody knows the extreme centralization in education sector is the one of the motto of the union government. The issue of need still exists. The Tamil Nadu state, the representative from Tamil Nadu is here. Tamil Nadu state government has taken a very strong stand for the protection of the interest of their state in the education sector. Naturally, it is against the interest of the union government. It is against the wishes of the union government. The Legislative Assembly has passed the resolution against the need. The governor of the state openly criticized the state government and their principled position on the issue of need. The powers in the union government, the union list, are in the hands of the union government. They are taking the decisions unilaterally without any inclusion of the opinion of the states. Moreover, there is no formal institutional structure for the mandatory consultation between the union and the states for the legislation under the concurrent list. Sir, state revenue and the role of the governor should be discussed here. Why? This is an important subject. The revenue of the state is facing a lot of problems because of the intervention of the governors. In this great republic, one of the governor in India openly told the public that he did not sign the budget speech of the state government. It has created an uncomfortable situation in the state. The duty of the governor is to follow the advice of the cabinet. The wise men who have adorned this post had worked in such a way. But reality of the spirit is that the wisdom is rare in Raj Bhavans. The post-liberalization period witnessed a sharp decline in the fiscal health of the state government. Most of the states are facing fiscal crisis. The important factor behind this fiscal crisis strain is the policy of the union government. That is why the states are facing the fiscal crisis. Many states have tried to introduce different alternative measures to overcome the situation. But unfortunately, then the governors are making hurdles. The governors are making hurdles. The residuary powers of taxation in the sphere of services are being unilaterally used by the union government. To the total exclusion of the states, the GST captured the end right of the taxation of the states and LSGs. The allocation of the money to the states is linked with the reforms in the administrative sector. The financial allocation. Honorable member, may I just request you, in the previous session, you had taken about 21 to 31 minutes roughly to speak. You have taken about 15 minutes. So if you think about concluding shortly, then other members will also get an opportunity. I will finish. Thank you. Because you had already spoken in the earlier session, that is why I'm just requesting. Thank you. The residuary powers of taxation, already I mentioned here, the allocation of the money to the states is linked with the reforms in the administrative sector. The financial allocation of the union government is not charity. It is the right of the states. So the financial allocation should not be linked to any kind of reforms by the union government. The governors should stand for the financial autonomy of the state. It is the duty of them. The financial burden of the states caused by the governors should be discussed. Fiscal crisis of the states and the expenses of the governors should be debated. I have received an answer from the government to my question that the total expenditure of the National Mission for Libraries in the year 2019-20 is only 73 lakhs. Annual expenditure of some Raj Bhavans is more than 30 times. Respected Chair, media has reported Maharashtra government has given an answer to an RTI question. They revealed that the expenditure of governor for 2 years is 60 crore rupees
it is the 10 times of the entire allotted amount of the union government to National Mission for Libraries. Currently, the expenditure of the running of the office of the governor and the family of the governor is the duty of the state. This expenditure of the governors should be audited by the society. The governors are appointed by the union government, but the salary and other allowances are paid by the state government. Appointed by the union government, but the salary paid by the state government. We need to start it is wrapping up, irrational. honorable member. The salary of the representative of the union government appointed by the union government should be paid by the union government. The burden of the salary and upkeep should not be transferred to the state. 1 minute, within 2 minutes, I will finish. The Rajbhavans are representing the colonial era of India. Majority of the Rajbhavans are not only the residents of the governors, but also their leisure houses. Look at the existence, expenditure and facilities of the Rajbhavans. In Maharashtra, 4 Rajbhavans, Mumbai, Nagpur, Pune, Mahabaleshwar, sir. One governor is residing in 4 palaces in a single state. A palace for 3 months. That means for the rest of 9 months, the palace is empty. Then how this palace will be maintained? When governor is not there, who will occupy the palace? Crores of Indians are living without a shelter, but a governor, a titular head of the national state, is using 4 palaces. Why these kind of practices are continuing? During the travel, the VVIPs, chief minister and ministers are utilizing the circuit houses or guest houses. Then why the permanent palaces for the governor in different places? They hardly stay in these palaces. Uttarakhand, sir, 2 Rajbhavans, Dehradun and Nainital. Nainital Rajbhavan occupies 220 acres land, which includes 45-acre golf course. The residence of the governor is a highly restricted area, but the golf course is 45 acres. State government should ensure that this land is occupied, land is properly utilized. And in Tamil Nadu, sir, Tamil Nadu, there are 2 Sir, Rajbhavans. I'm giving you the last minute, thereafter I'll move I will on. mention only the I've residential. already indulged you in the previous session. You have spoken Residence of the 31 governor. minutes. Tamil Please Nadu, conclude. there are 2 Rajbhavans. They are Chennai and Ooty. Chennai Rajbhavan estate is 156 acres. It is in the reserved forest area. It might be buffer zone. In Tamil Nadu, I don't know, the governor is in the buffer zone. Ooty is one of the noted tourist place of the nation. Is the governor is a tourist, sir. Winter palace, summer palace. How rich a country, sir. In West Bengal, Honorable 2 member, Rajbhavans. I'll have to move on. Yeah. I'm moving West on. Bengal, I'm moving 2 on. Okay, I'm moving on. 1 second. Please conclude your last comments, please. West Bengal, 2 Rajbhavans. One is Please Calcutta conclude. and second one is Darjeeling. In Odisha, your own state, 2 Rajbhavans. One is Bhubaneswar and another one is. I think I'll have to In move Madhya on. I've Pradesh, given you 2 time. Rajbhavans. I've requested you repeatedly. Bhopal, Please, your and closing comments and we Panchmandi. move on, Okay, sir, please. I am finishing. These things, the governors, the titular head of the states, how they are making the hurdles of the state, functioning, administrative function of the state, these things, this August House, please discuss seriously. And I request the state, all of you take the initiative for stop the revenue, making the hurdle, stop the making the hurdles and taking the wrong practices of the governor and try to end the colonial era practices in our nation. Thank you, sir. Thank you. With these words, Thank you. Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Dr. Anil Agrawal, Honorable Member. 9 minutes allotted to you. महोदय, भारतीय संविधान की एक खूबसूरती रही है कि किसी भी पद पर
किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई ना कोई क्रॉस चेक जरूर रहता है। इस संविधान में जो गवर्नर का पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और जब संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को बनाया बहुत सोच समझकर इस पद को बनाया गया और इस पद पर हमेशा बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहे हैं। मेरे जो मित्र केरला से आते हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगा, वहाँ वर्तमान में भी जो गवर्नर है महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर। आप अगर उनकी स्पीचेस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप किसी विद्वान व्यक्ति की स्पीच सुन रहे हैं। और हिंदुइज्म और जो जिस धर्म से वो आते हैं मुस्लिम, उसके बारे में श्लोक और आयतों के माध्यम से जो वो बोलते हैं पूरा देश उनकी बातों को सुनता है। अधिकांश ऐसे हमारे महामहिम हैं जो वास्तव में बहुत ही विद्वान हैं और वो संविधान की रक्षक के रूप में स्टेट में काम करते हैं। जो मेरे मित्र ने कहा अगर उस बात को मान लिया जाए तो पूरी जो संवैधानिक ढांचा है वही चरमरा जाएगा और जो क्रॉस एंड चेक की जो हमारी एक संस्कृति है, पद्धति है, एक तरीका है, वो पूरा का पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट्स जो चुन के आएंगी वो पूरी तरह से मनमानी हो जाएंगी, बेलगाम हो जाएंगी। कई बार लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे भी लोग चुन के आ जाते हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, किसी भी मुद्दे पर चुनकर आ गए और उसके बाद वो मनमानी करने की कोशिश करते हैं। और मेरे विद्वान मित्र ने जो कहा जिस प्रकार से वो महामहिम को हटाकर और उस पद को दोबारा लाना चाहते हैं, उसमें उनका जो सजेशन है उसमें ये है कि साहब वहाँ के जो एमएलएज हैं, वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वहाँ के जो कॉरपोरेशंस हैं, वो सब मिलके महामहिम का चुनाव करें इलेक्शन। महोदय, स्टेट में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर का जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है और एक स्टेट में अगर दो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दोनों इलेक्टेड हो जाएंगे तो शायद जो पर्पस था हमारे संविधान निर्माताओं का गवर्नर के पद पर नियुक्त करने का, वो पूरी की पूरी तरह से डिफीट हो जाएगा। महोदय, मेरे मित्र ने एक ये भी सुझाव दिया है अपने बिल में कि 2/3 अगर एमएलए को चाहें तो वो गवर्नर को हटा सकते हैं। गवर्नर के पद पर वर्तमान में जो नियुक्ति होती है वो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है और राष्ट्रपति इलेक्टेड पद है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है उसमें हर विधानसभा के विधायकगण, लोकसभा के सांसदगण, राज्यसभा के सांसदगण, सबकी डिफरेंट वैल्यूज एमएलएज की रहती है, एमपीज की रहती है और पूरे देश में उसका एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और उस चुनाव के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति का पद पर व्यक्ति आसीन होता है। उनकी इंटीग्रिटी को या उनके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शंका की दृष्टि से देखना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। मैं आपको पूर्व में भी ले जाना चाहता हूं, जो मेरे मित्र मुझे लगता है गवर्नर के पद से परेशान हैं। कुछ कांग्रेस सरकारों में इस प्रकार के गवर्नर्स रहे हैं जिनका आचरण ठीक नहीं रहा, तो मुझे लगता है वो दृष्टांत उनके सामने है, लेकिन अधिकांश मामलों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है और गवर्नर्स की अपनी एक गरिमा है। आप देखिए जब स्टेट इलेक्शंस का चुनाव होता है उस समय गवर्नर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर गवर्नर भी राजनीति से प्रेरित होकर काम करने लगे तो मुझे लगता है पूरी की पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है
चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलाने की व्यवस्था है, उनका सदन में जो बहुमत सिद्ध करने की व्यवस्था है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो सकती है। महोदय, राजभवन के रेजिडेंसेस के बारे में कुछ मेरे मित्र ने बताया है कि किसी स्टेट में 3 हैं, कहीं 4 हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजभवन वास्तव में कई स्टेट में ज्यादा हैं, लेकिन उसमें 1 सीट या 2 सीट महामहिम राज्यपाल के लिए आरक्षित रहता है। बाकी का जो राजभवन है वो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा यूज किया जाता है, उनके सेक्रेटरीज के द्वारा यूज किया जाता है। और उन राजभवनों में जब महामहिम नहीं भी रहते तब भी स्टेट में वीआईपी गेस्ट उसी राजभवन में निवास करते हैं। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो सुरक्षा की दृष्टि से भी उचित है। कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे गणमान्य व्यक्ति होते हैं जो उस स्टेट में विजिट करते हैं और विजिट करते समय उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो उनको उन राजभवनों में ठहराया जाता है। वो राजभवन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी लोकेशंस पे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो उसमें जो हमारा बाकी की जो चिंताएं होती हैं उन महामहिम व्यक्तियों को ठहराने की, वो चिंताएं हमारी दूर हो जाती हैं। महोदय, आज जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा गवर्नर को चुने जाने का, चयनित करने का जो सिस्टम है वो भी बहुत लोकतांत्रिक है, और अगर उसमें हम किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट बहुत खराब होगा। हमारा जो गवर्नर का पद है बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद है और राज्य सरकार की मनमानी को रोकने का एकमात्र जरिया है कि वो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उसमें बहुत सारे निर्णय करते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि उस व्यवस्था पर भी हमारे न्यायालयों द्वारा उचित कार्रवाई समय समय पर की गई है। अगर किसी महामहिम राज्यपाल द्वारा कोई निर्णय गलत लिया गया है, कोर्ट में चैलेंज हुए हैं बहुत सारे निर्णय, विशेषकर जो उनके निर्णय चैलेंज हुए हैं वो निर्णय हैं जो सरकार के फॉर्मेशन से हैं, सरकार के बनाने से हैं, चीफ मिनिस्टर के शपथ से लेके चीफ मिनिस्टर नॉमिनेशन, चीफ मिनिस्टर का सदन में बहुमत, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कई बार चैलेंज हुई हैं। उनमें भी लेकिन अधिकांश समय जो न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय आए हैं। माननीय सदस्य, 1 मिनट आपका और है, और 1 मिनट है। कोई बात नहीं, मैं कंक्लूड करता हूं सर। उनमें भी जो व्यवस्थाएं रही हैं वो ऐसी रही हैं कि उनमें अधिकांश निर्णय जो महामहिम राज्यपाल के द्वारा लिए गए वही निर्णय अपहेल्ड हुए हैं। मैं पुनः अपने मित्र से ये अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो ये बिल लाया है इसको वो वापस लें। उन्होंने कुछ हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से या और किसी दबाव में ये बिल लाए हों, लेकिन मुझे लगता है अगर वो बिल वापस लेंगे तो संविधान की मर्यादा बचेगी। संविधान भारत का जो निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर बनाया है और एक ऐसे पद पर जो बहुत बड़ा संवैधानिक पद है, उस पे हम किसी भी प्रकार से अगर मुझे लगता है छेड़छाड़ करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि मैं पूरे सदन से ये अनुरोध करूं कि इस बिल के विरोध में अपना मत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable Member Dr. L. Hanumanteya ji, 15 minutes. You have 15 minutes allotted by your party. Sir, thank you, Chairman, sir. Sir, the private member bill moved by Dr. Shivadasan is timely, and this upper house with the representation of different political parties has to discuss thoroughly, and I request the house to have a unanimous decision on this in implementing the bill so that
the friction between the central government and the state governments, particularly the governments in the center, and non-political attitude will prevail in the state, sir. Sir, Article 153 says there shall be a governor in each state and one person can be appointed and he can be given 2 or 3 states as in charge. A governor is appointed by the president and is a nominee of the central government. Sir, it is stated that governor has a dual role, that he is the constitutional head of the state, bound by the advice of the Council of Ministers of that particular state. Sir, he functions as a vital link between the union government and the state government. Sir, the governor has the power to grant pardons, reprieves, according to Article 161. Sir, the governor with the CM, head of the state, that accepts some conditions for discretions, he has to take the advice of the chief minister of the state, who is the head of the executive. Sir, the governor appoints the chief minister and other ministers according to the Article 164. He assents, withholds the assent, or reserves the bill for the consideration of the president passed by the legislative assembly. Then, sir, the governor may promulgate the ordinances under certain important circumstances according to the Article 213. Sir, governor is envisaged as the apolitical head. This is a very important factor to be considered. He is always an apolitical head who must act on the advice of the Council of Ministers. However, the governor enjoys certain discretionary powers granted under the Constitution. For example, giving or withholding assent to a bill passed by the legislature, determining the time needed for a party to prove its majority, or which party must be called first to do so, generally after the hung verdict in any election during the time. Sir, there are no provisions laid down for the manner in which the governor and the state must engage publicly when there is a difference of opinion. There is no provisions laid down so far, sir. Sir, the governor has 5-year term in an office. Sir, in 2001, the National Commission to Review the Working of the Constitution held that governor owes his appointment and his continuation to the union. There is an apprehension that he is likely to act in accordance with the instructions received from the Union Council of Ministers. It is only an apprehension, but it is not the fact. In the Constitution, sir, there are no guidelines for exercise of the governor's powers, including the appointment of a CM and dissolving the assembly. There is no limit set how long a governor can withhold assent of a bill. The governor sends a report to the center, which forms the basis of the Union Cabinet's recommendations to the President for invoking Article 356. This is another important article which the governor has to follow very carefully in the interest of the center as well as the state. Sir, why the attempts have been made to address concerns over the alleged partisan role played by the governors is the question I think we have to address today. Sir, changes regarding the selection of governors. Sir, the National Commission to review the working of the Constitution, appointed by the Atal Bihari Vajpayee's government in 2000, suggested that governor of a state should be appointed by the president after consultation with the chief minister of the state, which has to be noticed
and no central government so far has followed this to have a consultation with the Chief Minister. Sir, the Sarkaria Commission, set up in 1983 to look into the center-state relations, proposed that Vice President of India and Speaker of Lok Sabha should be consulted by the Prime Minister in the selection of the governors. This is another proposal by Sarkaria Commission, which is a landmark commission during that period. Sir, that Punchi Commission proposal says Justice Madan Mohan Punchi Committee, constituted in 2007 on center-state relations, proposed in its report that committee comprising the Prime Minister, Home Minister, Vice President, Speaker, and concerned Chief Minister should choose the governor. This is another recommendation by the committee, sir. The Punchi Committee also recommended deleting the doctrine of pleasure from the Constitution, but backed the right of the governor to sanction the prosecution of ministers against the advice of the state government. So it also argued for a provision for impeachment of the governor by the state legislature. Sir, these are all the duties of the governors where we have to follow meticulously. Sir, unfortunately, today, what is happening, what are the comments in the public domain, and how the governor's officers have been treated by the central government, and why the state governments are forced to go to the Supreme Court to implement the constitutional spirit, which are not clear guide, which they don't have a clear guidance in this respect. Sir, the Supreme Court questions, can governors kill the bills passed by the Assembly? This is the question raised by the Supreme Court, sir. The substantive part of the Article 200 empowers the governor to withhold the assent of the bill. But in such an event, governor must mandatorily follow the course of action which is indicated in the first proviso of the communicating to the state legislature as soon as possible. A message warranting the reconsideration of the bill. But in most of the cases, sir, where people are in front of the Supreme Court today, the state governments are in front of the Supreme Court today, the minimum requirement of warranting the state legislatures as soon as possible, a message warranting the reconsideration of the bill has not been followed. Many a times, years together, bills were pending in the governor's office. This is the major cause to an elected government by the governors who are the representatives of the central government has followed. That is the major issue today which is under discussion. Sir, Baba Saheb Ambedkar has said during the draft constitution to the Constituent Assembly on November 4, 1948, Ambedkar highlighted the need to diffuse the constitutional morality in Indian society. He has also said that it is imperative to deepen the democracy, which is only a top dressing on Indian soil, which is essentially undemocratic. Sir, the journey of these 75 years of independence, the constitutionalism in India provides the perfect context to revisit the idea of constitutional morality, what Ambedkar said during that time, during 1948. It is also said the constitution and morality in light of the ongoing tussle between the governors and the elected governments, especially in Kerala, Maharashtra, of course not now, the government has changed, Punjab, West Bengal, Tamil Nadu. The noticeable factor is all these governments are non-BJP governments. That is what is to be noted today.
Sir, the Supreme Court has expressed serious concern about the delays by the governors in assenting the bills passed by the state elected legislators. This violates the constitutional provisions and the doctrine of constitutional morality, which Ambedkar was talking about. Sir, the Constitution of India has envisaged the role of the governors as custodians of the constitutionalism in respective of states. However, owing to the nature of appointment using nominee selection by the union government, most of the time governors abide by the obligation of the ruling dispensation rather than the constitutionalism. This is the major observation at this time, sir. Sir, this has deepened the crisis between the union government and the state government, which is eroding the principles of cooperative federalism. Sir, the conduct of the governors in these states has resurrected the question of the need to continue the governors in office in a parliamentary democracy. That is the crisis today. That is a serious crisis today. So the fact that there is a conflict between the governor's office and the elected governments is a very sad part of the democracy, a serious concern of the democratic process. Sir, the immediate consequences of this trend are affecting the public governance and administration, erodes the harmonious relation between the state and central government, and it also affects the governor office, destabilizes the elected government as they are under pressure and non-performing the governance. This union-state relations, overall, the federal scheme of the constitution is in the state of disequilibrium. Sir, there are some solutions suggested by the experts of the constitution and people who have experienced the 75 years of independence. Sir, one that, firstly, the state government must be consulted before the governor's appointment by the union government. This is the suggestion, as recommended by the Sarkariya Commission. This will ensure much needed consultation between the union and state governments, thereby strengthening the relationship between both these governments in the true spirit of cooperative federalism. Sir, secondly, the Supreme Court of India must direct the Union Ministry of Law and Justice to frame the guidelines for the governor office in consultation with the Law Commission of India to assent to the bills on time to avoid unregulated delays in the future, which is very much required and necessary. Sir, thirdly, empower the office of the President of India. Honorable member, you have to recall. I'll go according to your time. Empower the office of the President of India to recall the governors who are the subject of the constitutional violation in discharging the duties as per the Article 200. Article 200 has become a serious concern today, where the governors are playing with it, with the discretionary powers given by the Constitution to them are not followed with a judicious thinking and judicious decisions. Sir, lastly, the time has come to remove the word otherwise in Article 356 through a constitutional amendment, as governors have misused the word to dissolve many elected governments in the states. Thank you. So, sir, last sentence, this will curtail some of the discretionary powers and prevent the misuse of governor's office by the union government, whichever is in the power. These things, if they are followed, the real private members which we are discussing will have some fruitful decisions, sir. Thank you very much. Thank you. Honorable member Shri Jawahar Sarkar. You have 7 minutes. Thank you, sir. Thank you for giving us this opportunity
of supporting the constitutional amendment brought in by Dr. Sivadasan to introduce election of governors as a mode to save the constitution. Now, one of the most depressing news that I as a legislature, you as legislators, we all as part of the overall structure of governance, one of the most depressing news that we have heard in the last few days is the manner in which a governor, I am referring to the governor of Tamil Nadu, was pulled up by the Supreme Court for exceeding his jurisdiction. The Supreme Court has intervened from time to time, pulling up the governors of Kerala. Our governor in West Bengal has set new records, putting up the governors of Maharashtra for exceeding their powers. This all emanates from one mischievous word. I use the word, sir, one mischievous word in the Constitution that was a legacy of the colonial past. And this word is found, discretion is found in Article 163, subarticle clause 2. Now, based on this article, this is a colonial legacy. We all speak of colonial legacy, but we do not know how to define it. Anything that suits, anything that militates against our way of thinking, anything that militates sometimes against what I call the culture of the Ganga Valley is said to be colonial and fit to be dumped out. No, it is not so. Colonialism spells itself out through the mechanics of power and hegemony. Through power and hegemony. And this is proved through the continuation of the powers of the institution of the governor in a democratic federal setup. This post came up from the Government of India Act, Imperial Act of 1919. It was carried on through the Government of India Act of 1935. And I would inform my honorable friends on both sides that the Deputy Chief Minister of West Bengal at that time, Shyama Prasad Mukherjee, whom they respect a lot, had a series of guerrilla wars with Governor Herbert, who did not allow him to exercise his democratic powers. Now, in a free and federal and democratic India, we should have learned the lesson and circumscribed, cut the talons of the governor, but instead we put this 163(2). Today, this bill seeks to bring in 153, an amendment to Article 153 to introduce elections. Now, we can't have a diarchy, sir. This is a democratic polity. You can't have two governments of India. There is one government of India that is elected by 37% vote. We respect it. Respect also the state governments that have been elected by the same electorate for governing their states. And do not assume that just because you have a colonial post, you can interfere with it, you can trip it, you can sabotage it whenever you feel like. You cannot. You have learned your lessons in the opposition. While in the opposition, you will learn them again when you come to the opposition. Now, having said this, West Bengal has the singular fortune of being out with the central government for 49 years. 2-3 generations. My generation has never seen any ability. And the instrument of the post of governor is used for every purpose, including the interference with the intrinsic law and order powers of the state. If there is any comment to be made, let the Home Ministry come up and make a comment. But why should a governor advised by an undersecretary? I am saying, sir, at the cost of contradiction, all governors, irrespective of regime, are run by diktats issued by undersecretaries and deputy secretaries of the Ministry of Home Affairs. Come and challenge it and say, no, I will ask for the correspondence. I know what I'm talking about. It hurts the self-respect of any thinking person. The bureaucrats of North Block cannot be allowed to run a free run over the democratic aspiration of the different peoples of India. The election is because we consider the post of governor to be largely protocol, largely ceremonial, so that the chief minister doesn't have to run to every function. Seedhi baat mein keh diya. But then you can't bear such a huge expenditure. You can't go in for a huge expenditure at the lavish scale on which you have said. The lavish scale itself
whether the bill is passed or not, is a subject that government may like to review because it smacks of colonial imperialism. We have spoken, supposing, I'm giving a minute only, supposing you had a similar institution in the government of India. Supposing you had the president telling you morning and evening, "Ye aapne galat kiya, aapki law and order." I mean, you can't run. You are insulting the people who have elected that government, the central government or the state government. You cannot run. We had a small instance of this when President Zail Singh was having his run-ins with the Prime Minister of India. And that is not a very pleasant experience. Remember that experience and squeeze it to the experience of states. You'll know how you have created a ceremonial post into a nuisance, absolute nuisance. I support the election because the election would again be in tandem with what the people of that Honourable state member, want 1 minute. for the governor, what they want for the governor. Sir, the core of our strength is federalism. As of democracy, it is federalism that represents. I come from a state that is quite distant from the Ganga Valley. I come from a state that is quite distant from Tamil Nadu. But we feel that we are all together because we are respected. If you carry away the self-respect, you destroy India. We are one because we are many. Do not try to homogenize us. With these words, I support them. Thank you. Honourable member Shri Santosh Kumar P, you have 3 minutes. Thank you, Vice Chairman. Even though the mover of the bill belongs to a political party which is very close to my party, I can't support this bill because my party, the Communist Party of India, stands for the abolition of the very post of governor. And this issue was highly debated in the Constituent Assembly as well, years ago. And Rohini Kumar Chowdhury, a prominent member from Bihar, had stated that a piece of cow dung can spoil entire vessel of milk. She was referring to the activities of the governor of Sindh. It's not history, but this is relevant even today. Governors they have become treble engines to destroy everything in states. I don't want to give you a details of what is happening in Kerala and Tamil Nadu. Governors have become political manipulators. So why we need the post of governor? The mover have given a detailed list of examples, how the governors are spending money, how decorative their life is, how extravagant they are. So I don't want to add anything more. To perform the role of a governor and the duties of a governor, if at all anything is there, that can be done by the Chief Justice of a state or a Supreme Court Chief Justice. Nothing more is required. So I think it is high time to think about the abolition of the very post of the governor. And secondly, I think almost all parties are in agreement of the continuation of the post of governor. At least let us think about changing the very name of Rajbhavans, because it's an old British name. No, I am not in favor of the name-changing virus. That virus has affected everywhere in our country, every aspect of life, sphere of life. But Rajbhavans, these people who are sitting in the Rajbhavan think they are Rajas of modern time. So they at least let us, take initiative to rename Rajbhavans. And moreover, I can tell you, this extra-constitutional overstepping activities of the governors must be controlled at any cost. And when we talk about the election of a governors, see, you have a minute are more. not relevant because the electoral college which he suggests consists of even local representatives, or representatives from local bodies. That makes it's a very strong position because the chief minister, if you want to elect the chief minister, what you want, you have to, the members of the assembly can elect the chief minister. But here to elect the governor, you need the support of members of the assembly plus local, body representatives. That makes the post of the governor time is more, running out. Let me complete, sir, please. 1 minute. Make it more, more powerful. So that it should not be higher than the elected chief minister of a state. The chief minister is, of course, that is the highest democratically elected body in a state. Then how can be the governor above that? Then, moreover, to dismiss the governor, we don't want the representatives from the local bodies. Honourable member, your time is over. That also Please drawback conclude. of the bill. So anyway,
Sir, let me add this point once again, that we all have to think about the post of governor, and this post must be abolished at any cost. Thank you. Thank you. Honorable Shri R. Girirajan ji, just before you start, let me clarify that you have 3 speakers from your party, and the total time for your party is only 5 minutes. Total So therefore, we'll be only able to provide 2 minutes or max 2.5 minutes per member. It is decided as per the roster. I can't help it. But, sir, Honorable Tiruchi ji, you are a senior member. You are part of the chair, you know. We work by the roster. We can't have a discretion. So 2 minutes, sir. Please. Sir, respected sir. Thank you, sir. Thanks, my leader, Tiruchi Siva. It's the right time to discuss the governor's need or not. I want to say in Tamil, our leader, Peririjar Anna, who has in the அவையிலே மிகப்பெரிய தலைவராக பரிணாமப்படுத்தப்பட்ட நேரத்திலே அவர் சொன்ன வார்த்தை, ஆட்டுக்கு தாடி தேவையில்லை. Beard not to the goat. Like governor post not necessary to the government, state governments. ஆட்டுக்கு எப்படி தாடி தேவையில்லையோ நாட்டுக்கு கவர்னர் தேவையில்லை. இந்த கவர்னர் பதவி என்பது மிகப்பெரிய அலங்கார பதவி. இந்த அலங்கார பதவி என்பது ஒருவரை கவர்னர் ஆக்கிவிட்டு மத்திய அரசு தனக்கு வேண்டாத அரசுகள் இருக்கின்ற இடத்துங்களிலே அவர்களை தலையாட்டி பொம்மைகள் போல் வைத்திருப்பதற்காக கவர்னரை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலே மகாராஷ்டிரத்திலே என்ன ஏற்பட்டது? கேரளத்திலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? தெலுங்கானாவிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? ஏன் எங்கள் தமிழ்நாட்டிலே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? 15க்கும் மேற்பட்ட மாநில அரசுகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெரும்பான்மை பெற்ற மாநில அரசாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசு தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையிலே இயங்கிக் கொண்டிருந்த போதிலும் நாங்கள் அரசியல் சட்டம் வகுத்து தந்திருக்கின்ற நெறிமுறைகளின் அடிப்படையிலே பல்வேறு மசோதாக்களை, மக்கள் நலனுக்கான மசோதாக்களை நிறைவேற்றி கவர்னருக்கு அனுப்பிய நேரத்திலே கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளாக 15க்கும் மேற்பட்ட மசோதாக்களை தன்னுடைய காலுக்கு அடியிலே போட்டு மிதித்துக் கொண்டிருப்பவர் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டின் கவர்னராக இருக்கின்ற திரு R.N. ரவி அவர்கள் என்பதை இந்த மன்றத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். We have to discuss. Please wrap up, please. The time limitation should fix for assent given by the governors on several issues. In India, states are also not strangers to controversies arising with their governors, most of them relating to choosing of chief ministers, conducting floor tests, dissolving legislative assemblies, recommending president's rule and delaying assent to bills or reserving them for president's consideration in the recent times besides Tamil Nadu, Chhattisgarh, Haryana and Kerala and Telangana. Article 153 of the Constitution provides for a governor in each and every state. The executive powers are vested in the governor under Article 154. Honorable member, the constitutional please conclude. We'll have to move on. Warrants that assent of the governor or the president is a necessary for all bills to become the law of the land. The Supreme Court in Shamshar Singh versus State of Punjab 1974 has settled the position that the governor is only a constitutional head under the executive powers of the state. I'm moving on, honorable member. Exercised I'm sorry, by the your time Council is up. I'll of have to move Ministers, on. which you have Article of Shri India. Sujit Kumar, honorable member Shri Sujit Kumar. Sorry, I'll have to move on. Shri Sujit Kumar. I'm sorry, your time is up. Honorable member Shri Sujit Kumar. No, it's as per time. It's as per time. I'm sorry. You know the rules. You know the rules. You know the rules. Honorable member, please sit down. It's not going on record. It's not going on record. It's not going on record. Please, please. Honorable member Shri Sujit Kumar. मेरा समय अभी शुरू होना चाहिए. All right. और सर आप तो दिलदार हैं, 1-2 मिनट ज्यादा दे दीजिएगा. मेरे हाथ में नहीं है, माननीय चेयरमैन साहब का निर्देश. Sir, although I acknowledge and appreciate. You have a total of 5 minutes. Sir, 1-2 minutes, sir. Sir, although I appreciate and acknowledge the sentiments and the spirit with which this bill has been introduced by my dear friend and esteemed colleague,
Mr. Shivdasan, I do not support the bill because I think it is neither desirable nor feasible. And I'll give you 4 reasons, sir. One is the issue of accountability. One is the constitutional reasons. Third is the normative grounds. And fourth are the constitutional debates which have settled this issue in my view. Sir, we have to understand the difference between accountability and constitutional responsibility. The high office of governor is that of constitutional responsibility, constitutional authority, not accountability. Sir, in his arguments, the Honorable Member Shivdasanji, sir, alluded to the stature and dignity of the high office of the governor. I completely am with him on that. And he argued that because of this high office which the governor holds, he should enjoy the support, legitimate support of the people, and he should be accountable to the people. But sir, for this, we already have an elected government in the state. Can you have 2 parallel power centers, one of the chief minister and one of the governor? Sir, the office of governor should evoke, sir, cooperation and respect. And to give further clarity, I would like to quote what the Constitutional Assembly member, Mr. B.G. Kher, had said. The most important principle of good government in a popular constitution is that no executive functionaries should ever be appointed by popular election. No executive functionaries should ever be appointed by popular election, neither by the votes of the people themselves, nor by those of their representatives. Sir, next I come to the normative grounds why I oppose this bill. Sir, the office of governor should exert an all-pervasive moral influence on the state, sir, state government and the people of the state. Sir, I'd like to quote Sarkaria Commission, which Hanumantiaji elaborately referred to. Sir, Sarkaria Commission on Interstate Relations quoted the office of governor as the constitutional head is to act as friend, philosopher, and guide to the elected government, the Council of Ministers. And sir, if we have an elected governor, as is envisaged in this bill, sir, we will not have the check and balance, which is the core of our constitution, sir. How can an elected governor, sir, operate freely without being beholden to the party that has elected or that has chosen that person to be elected? Sir, how can the governor think independently? Sir, these are the reasons why I oppose this bill. Sir, while addressing the Conference of Governors in June 2005, the former President of India, Dr. Kalam, observed that while there are many checks and balances provided by the Constitution, the office of the governor has been bestowed with the independence to rise above the day-to-day politics and override compulsions either emanating from the central system or the state system. Sir, now I'll refer to the constitutional grounds why I oppose this bill. Sir, in our scheme of things, constitutional scheme of things, the governor plays a very important role in maintaining the federal structure of our constitution, which also is part of the basic structure in the Supreme Court judgment of 1973, Kesavanand Bharati judgment. Sir, the celebrated judgment of S.R. Bomai versus Union of India explains in detail the importance of this role, and I quote, this is the Honorable Supreme Court: the key actor in the center-state relations is the governor, a bridge between the union and the state. The office of the governor is a vital link and a channel of impartial and objective communication of the working of the constitution by the state government to the President of India. And he goes on, the judgment goes on, because of paucity of time, I will not get to it. Sir, it is also important for the House to visit the Sarkaria Commission report on the role of the high office of the governor, and I will briefly quote from the report. The governor in our system does not function as a constitutional head for the whole gamut of his responsibilities. There is an important area, though limited and subject to constitutional constraints, within which he acts in the exercise of his discretion. Honorable member, last minute. Sir, his live link of channel between the union and the states. He is a live link of channel between the union and the state. Sir, finally, I'll refer to the constitutional debate. Sir, on this very issue, eminent member T.T. Krishnamachari had quoted, and I quote, the position is either you make the legislature supreme or you make the governor supreme. If you adopt the presidential system, the governor is supreme. But under the parliamentary system that we have, the legislature and the leader of the majority party in the legislature will be supreme. The choice is obvious, and that choice is logical. Sir, unquote. Sir, in their infinite wisdom, the founding fathers of our constitution had anticipated such a situation. And there was elaborate discussion for 2 full days, sir, on 30th of May 1949 and 31st of May 1949. And 2 alternatives were suggested. Sir, give me, sir, 30 seconds. Sir, alternative 1. This is Article 131 of the draft Constitution of 1948. First alternative, the governor of a state shall be elected by direct vote of all persons who have the right to vote at a general election for the legislative assembly of the state.
This is the first alternative. Second alternative, the governor of a state shall be appointed by the president Honorable member. by warrant under his 30 seconds, sir, and seal from a panel of 4 candidates to be elected by the members of the Legislative Assembly of the state, or where there is Legislative Council Please in the state conclude. by all the members. Please conclude. Sir, after exhaustive and elaborate discussion, deliberation, debate, the Constituent Assembly adopted this second alternative with some modification, which is Article 151 as it stands today, that the governor of a state We'll shall have be to appointed conclude. by the president Honorable by member. warrant under his hand and seal. And sir, our first Prime Minister Pandit Nehru also, sir, sided with this argument, the second alternative. Please conclude. And Please sir, conclude. I feel there is no compelling reason to deviate from the wisdom of our founding fathers, and I oppose this. This is the reason I oppose it. Honorable member, Professor Manoj Kumar Jha, you have 3 minutes. वाइस चेयरमैन साहब, आपको शुक्रिया कहने में और जय हिंद बोलने में ही वक्त गुजर जाएगा। बहरहाल माननीय उपसभापति महोदय, वाइस चेयरमैन साहब, मैं उन तमाम पीड़ित राज्यों के पक्ष में खड़ा हूं जो अपने अपने लाट साहब से परेशान हैं, और परेशानी कई तरह की है। मैं तो ये मानता हूं हमारे बीजेपी के मित्रों के पास बहुत अच्छा पूल है। अब यही कितने लोग हैं जिनको मैं चाहूंगा अपने स्टेट ले जाऊं, बिहार गवर्नर बना करके। अच्छे लोग हैं, लोकतांत्रिक, विशाल हृदय। तो सर, माननीय उपसभापति महोदय,